लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में आप लोगों को कोई डाउट है? बिकॉज अभी शुरुआत में विल बी ए बिट स्लो थोड़े थ्योरीज में। वंस वी आर डन विद द थ्योरीज विल टेक, मतलब पेस हमारा अपने आप आ जाएगा, फिर इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो कोई डाउट है, फील फ्री टू आस्क, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आगे फाउंडेशन विल बी वेरी डिफिकल्ट। ओके, स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिफरेंस। तो व्हाट दे सेड वाज कि जो स्पेशियल मीन्स जोग्राफिकल डिफरेंसेस, मीन्स पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज, ओके, इन प्रेजेंट टाइम। तो अगर जो यूरोप वाले जब अफ्रीकन को देख रहे थे तो दे वर सेइंग दैट कि ये अफ्रीकन हमारा पास दिखा रहे हैं। तो दे स्टार्टेड इंटरप्रेटिंग द स्पेशियल डिफरेंस, दैट इज द जोग्राफिकल डिफरेंसेस, एज द टेम्पोरल वंस। ओके, दैट मीन्स कि ये हमारे पास्ट को दिखा रहे हैं, दीज आर मिरर्स और रिफ्लेक्शंस ऑफ आवर पास्ट, और मे बी वी आर देयर फ्यूचर। दिस इज व्हाट दे वांटेड टू अंडरस्टैंड, कि जोग्राफिकल डिफरेंसेस वेर इंटरप्रेटेड एज द डिफरेंसेस ऑफ टाइम। ये कम डेवलप्ड हैं, हम ज्यादा डेवलप्ड हैं, ये हमारा पास्ट है, हम इनका फ्यूचर है। इज इट क्लियर? और कोई डाउट? हाँ, वो तो अभी शुरू करेंगे वापस से। हाँ हाँ, वो दोबारा बताएंगे। कैन यू एक्सप्लेन indefinite to definite with one example? Yes. So we saw that when evolution happened, it was from simple to complex, homo to hetero, and indefinite to definite. Okay. So here, definite means a well organized way of doing things, which comes because of our past experiences. As the time is passing out, okay, we are learning more and more. हमारी साइंस की नॉलेज, हमारी इन सब चीजों की नॉलेज बढ़ रही है। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस इन अवर लाइफ, मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, दे आर नोन टू अस एंड वी नो द सॉल्यूशन फॉर इट। ठीक है, हमें ये पता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द पास्ट और जो प्रिमिटिव सोसाइटीज रही होंगी, वहां पे व्हेन आई से दैट कि कोई मैनुअल कोड बाय गॉड वाज नॉट गिवन, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम men would have decided ways of living with each other, कैसे रहना है, फैमिली कैसी होनी चाहिए, मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन को बनाया गया होगा। पहले वी वुड हैव बीन लिविंग लाइक एनिमल्स, मल्टीपल मेट्स, बट नाउ ग्रेजुअली वी हैव अ वे ऑफ लिविंग लाइक मैरिज। और पहले जैसे मैरिज रही होगी तो उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं रहे होंगे कि व्हाट ए मैन इज सपोज टू डू, व्हाट ए वुमन इज सपोज टू डू, हाउ बोथ द फैमिलीज आर सपोज टू इंटरैक्ट एंड ऑल दैट स्टफ। अब धीरे धीरे वो पूरा फिक्स्ड वे ऑफ लाइफ हो गया है। ठीक है, मैरिज में देयर आर स्पेसिफिक राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। मैरिज करने का एक तरीका है, मैरिज को तोड़ने का एक और तरीका है। ओके, इट्स नॉट समथिंग रैंडम कि कुछ भी कैसे मर्जी कर रहे। बट इनिशियली व्हेन दीज रूल्स ऑब्लिगेशंस वेर नॉट देयर, थिंग्स वेर एट रैंडम, कोई कैसे भी कर रहा है, एंड वहां पे ट्रायल एंड एरर चल रहा होगा। ये सही चल गया तो सही है, आगे से इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, एंड दिस ट्रायल एंड एरर वर द सोर्स ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, एंड वंस एक्सपीरियंस वाज सक्सेसफुल, या एक्सपीरियंस अच्छा था, तो वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट इनटू आवर वे ऑफ लाइफ, और उसको बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, तो थिंग्स मूव्ड फ्रॉम, और द बिहेवियर मूव्ड फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट। नाउ अब जैसे कई सारे बीमारियां हैं आज के टाइम पे, मेजॉरिटी ऑफ बीमारी जो हम लोग को होती है, वी गो टू द डॉक्टर, ही और शी प्रिस्क्राइब्स सम स्पेसिफिक मेडिसिन। जब मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वर डूइंग ट्रायल एंड एरर्स, जस्ट लाइक वी वर डूइंग फॉर कोविड। तो पहले हम लोगों ने मलेरिया की मेडिसिन ली, फिर पता नहीं कौन कौन से स्टेरॉइड्स लेना शुरू किए, फिर बाद में पता चला ये सब बेकार हैं, किसी का कोई यूज नहीं है। नाउ वी हैव, बट आफ्टर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, वी हैव ए डेफिनिट क्योर फॉर कोविड और नॉट, कि जब कोविड हो जाएगा तो क्या क्या प्रैक्टिसेस हम लोग को फॉलो करनी है। तो दिस इज नाउ डेफिनिट। बट ये डेफिनिट स्टेज कब आया है? आफ्टर ए लॉन्ग टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। इनिशियली वी वर ऑल्सो फॉलोइंग ट्रायल एंड एरर। इज इट क्लियर? A very long doubt, I'll read it down. Sir, we say that this generation of children nowadays are very advanced in terms of using technology. Suppose like Europeans, if we put ourselves at higher position in hierarchy and imagine children as our past.
but they aren't the same as we were in the past. So we can't say that we were the same children in past. So is this contradictory to what European thought? नहीं नहीं. See, what I was trying to explain with this कि जब हम अपने younger ones को देखते हैं तो हम अपना past देख रहे हैं. I was just trying to create an analogy, but this is not exactly appropriate analogy. See, but they were assuming this कि जो प्रिमिटिव कल्चर है, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं या सिंपल सोसाइटीज हैं, से ट्राइबल सोसाइटीज हैं, वो सिविलाइजेशन का पास्ट है. अल्टीमेटली जब इनके पास भी टेक्नोलॉजीज आएंगी, ये लोग भी डिस्कवरीज करेंगे, दे विल फॉलो द सेम वे ऑफ लाइफ एज द पीपल लिविंग इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटीज आर फॉलो. ठीक है, एंड दैट इज वाई दे वर सीइंग देम एज देयर पास्ट. तो आई जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल वे ऑफ लाइफ तो काफी कुछ सिमिलर है आज के हमारे बच्चों की भी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमसे बहुत ज्यादा जूनियर्स हैं या कोई एलकेजी यूकेजी का छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको आप देखोगे तो यू विल डेफिनेटली हैव दैट नॉस्टैल्जिक फीलिंग कि यस ही इज गोइंग टू स्कूल. ऑल्दो द टेक्नोलॉजीज हैव advanced or way of life has changed, but overall the pattern of living is still the same. The grand macro level, we don't have to look at the micro levels. ओके, उसको भी वही करना है. 1 साल 3 साल की उम्र में ही विल बी गोइंग टू स्टार्ट गोइंग टू स्कूल. ही विल हैव टू पास ऑल द क्लासेस एंड देन ही विल हैव टू गो फॉर ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन के बाद उसको जॉब चाहिए या फिर कोई बिजनेस करेगा. एंड देन द नेक्स्ट थिंग व्हाट ही इज सपोज टू डू इज मैरिज. मैरिज के बाद ही इज सपोज टू हैव चिल्ड्रन एंड सो ऑन सो फोर्थ. द वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर. So what we are doing in present, that is ensuring a regular source of income for us, or mode of subsistence, be it job, be it entrepreneurship, whatever it is, he will be doing 20 years down the line. पर वो वही करेगा, और जो भी वो कर रहा है, पढ़ाई वगैरह जो भी कर रहा है, अल्टीमेटली उसको भी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम ही चाहिए. So this is what I wanted to say when I was comparing the younger children as our can be seen as our past. ओके, तो और कोई डाउट है आप लोगों को? हाँ. हम्म. नहीं नहीं, रैशनलिज्म वो दूसरी चीज है, और रैशनल थिंकिंग वाला बात, रैशनल थिंकिंग मतलब आई एम सेइंग दैट कि रीजंस होने चाहिए हर चीज के, तो दैट इज रैशनल थिंकिंग वाला. और रैशनल इज्म जब किसी वर्ड के पीछे लग जाएगा ना, तो व्हेन आई एम इज्म का मतलब होता है आइडियोलॉजी. कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, एनी काइंड ऑफ इज्म का मतलब है एक आइडियोलॉजी. ओके, एनीथिंग एल्स? कोई और डाउट है? यार आप लोग प्लीज, अभी शुरुआत में बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहे हो. फील फ्री, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी डाउट को एक्सप्लेन करने में, बट आप लोग मेक श्योर करना कि डाउट है तो पूछ लो. नहीं समझ में आ रहा तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन. बट इफ यू वोंट आस्क डाउट एंड क्लास के बाद आके जब मुझे कोई ये बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे फिर बहुत गुस्सा आता है. यार क्लास में आप लोग पूछ लो, ठीक है? एंड प्लीज, अगर आप ये सोच रहे हो कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. हो सकता है कि आप किसी और की डाउट है वो शर्मा रहा हो और आप ही पूछ लो. ओके, so let's start with classical evolutionism. So what does this theory said? That culture evolves in stages. Okay, the present culture or the present civilization of mankind has come in the present through several stages, and these stages have been in unilinear fashion, and these stages are savagery, barbarism, and civilization. The central idea of which is the idea of progress. So as the culture has evolved, we have progress. तो culture का एक ही direction में evolution हुआ है, and वो direction क्या है? Direction is determined by progress. We'll understand the meaning of progress, किस sense में वो progress की बात कर रहे हैं. But अभी के लिए it is progressive development of culture in stages from savagery to barbarism to civilization, and it has been from simple to complex, from homo
genity to heterogeneity, and from indefinite to definite. So this is the summary of classical evolutionism. कि every culture will pass through these three stages, irrespective of वो कौन सा culture होगा. हर culture शुरू होगा savagery से, will move to barbarism, and then finally the final stage will be the stage of civilization. Every culture, means be it the culture of India, the culture of America, whatever it will start from savagery to barbarism to civilization, and it will be in a unilinear fashion. This is the idea. Okay. So salient characteristics of this theory. The first one is cultures evolve in unilinear fashion, and this direction of evolution is based on progress, idea of progress. So we can actually, by using this idea, we can actually rank the cultures, और we can actually label the culture कि वो कौन से स्टेज पे है. क्या वो सैवेज वाले स्टेज पे है, क्या वो बार्बरिक स्टेज पे है, या वो सिविलाइजेशन वाले स्टेज पे है. ईदर ऑफ दिस स्टेजेस पे उसको हम रैंक कर सकते हैं, ठीक है, कंपैरिजन के बेसिस पे. ओके, देन द सेकेंड वन वी हैव सीन द डायरेक्शन इज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, होमो टू हेट्रो, indefinite to definite. I'm not explaining it once again. The third and the most important aspect of this, when we are studying different cultures, okay, so there will be some similarities in them. How to explain those similarities? So they say that similarities between cultures, और इसको ये similarities को anthropologically कहते हैं parallels between cultures. Okay, so parallels between culture are because of independent inventions. देखो, अगर मेरे और आपके बीच में सिमिलैरिटी है तो कुछ बिहेवियर में, तो दो तरीके हैं. या तो आपने भी इंडिपेंडेंटली इन्वेंट किया है और मैंने भी इंडिपेंडेंटली इन्वेंट किया हो, या फिर आई हैव इमिटेटेड फ्रॉम यू, मैंने आपसे कॉपी किया हो. बट दे से कि इमिटेशन नहीं हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट इन्वेंशंस. ओके, तो सिमिलैरिटीज और पैरेलल्स is because of independent invention. And ये independent invention क्यों हो रहा है? You and me, why we are making independent invention? Same kind of inventions क्यों कर रहे हैं? So here they gave the idea of what is called as psychic unity of mankind. ठीक है? Independent invention is due to psychic unity of mankind. Psyche का मतलब होता है how the way we think, and unity means we think similarly. So people all across the world will come with same solution for the same problem. This is psychic unity of mankind. So for example, let me give you a very good example. आप लोग फर्रे जानते हैं? फर्रे, ठीक है, सबने यूज किया होंगे फर्रे अपने क्लास में, एग्जाम में. यार शर्माओ मत, सच्ची बताओ, मैंने भी किए हैं. ठीक है, कॉलेज में तो कर ही लेते थे. तो ये बताओ कि आपको किसने सिखाया है फर्रे यूज करना. तो लेट्स बिगिन. So I was talking about the similarities between culture. So when we see the similarities between culture, so or parallels, the classical evolutionist says that these similarities or parallel, they are because of independent inventions. कि हम लोग independently उन सब चीजों को invent करते हैं. Okay, and this independent invention is because of psychic unity of mankind. Okay, so when I'm saying psychic
So that means we think similarly, or our cognitive processes are same or similar. So cognitive processes same means in given the same situation or same problem, we will come up with a same solution. ठीक है, सेम प्रॉब्लम में हम लोग सेम सॉल्यूशन के साथ आएंगे. दिस इज व्हाट इज साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, एंड दैट इज व्हाई this psychic unity of mankind is the proof of that it's the argument to say that ki all the cultures will move through the same stages of savagery to barbarism to civilization, because every human mind thinks similarly, and that is why the trajectory of cultural growth or cultural progress will be same. तो वो जो पाथ है ग्रोथ का या प्रोग्रेस का, वो सबका सेम होगा क्योंकि हम सोचते हैं एक जैसा है. एंड गिवन द सेम प्रॉब्लम वी विल कम विद द सेम सॉल्यूशन. तो आई वाज टॉकिंग अबाउट फर्रा. तो फर्रा मतलब जो चीटिंग के लिए हम लोग चिट वगैरह यूज करते हैं वो. तो आपको किसी ने सिखाया था उसके बारे में, लेकिन जब टेंशन हुई और एग्जाम याद नहीं रहा और एग्जाम में प्रेशर आया तो हम सब ने फर्रे बनाना शुरू कर दिया. ओके, और सबको सेम ही सॉल्यूशन आता है. दिल्ली के स्टूडेंट भी वैसे ही फर्रे बनाते हैं, और चाहे वो केरला के स्टूडेंट्स हो वो भी वैसे ही फर्रे बनाते हैं, और चाहे वो कश्मीर का हो वो भी ऐसा ही बनाता है. और छोटे छोटे बना के, और वो सब लड़के या लड़की जीन्स के छोटे वाले पॉकेट में छुपा के लेके जाते हैं. ठीक है, तो दिस इज ए ट्रिवियल एग्जाम्पल कि पैरेलल इन्वेंशन का, दैट कमिंग सेम प्रॉब्लम जब आएगी तो दे विल बी कमिंग विद द सेम सॉल्यूशन. तो नदी के पास रहोगे, ऐसा उन्होंने बताने की कोशिश की. इफ यू लिव beside river or on the banks of river, you will start catching fish. और जब आप फिश को कंज्यूम करोगे तो फिश को पाल आप देखोगे कि पूरे दुनिया में हर जगह पे फिश नेट एक ऑलमोस्ट सिमिलर है. अब ऐसा कैसे हुआ कि सब जगह फिश नेट सिमिलर हो गए? ओके, आप आज से 10,000 साल पहले अगर आप देखोगे पेलियोलिथिक कल्चर, जब हम लोग स्टडी करेंगे, या फिर आप लोगों ने सुना होगा, कभी पढ़ा भी होगा पीछे, पेलियोलिथिक, नियोलिथिक, मीजोलिथिक, चाल्कोलिथिक एंड ऑल दैट. तो ये पेलियोलिथिक क्यों कहा गया? पूरी दुनिया में पेलियोलिथिक कल्चर्स थे, ठीक है, साइट्स मिली हैं. पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक मीन्स स्टोन, ओल्ड स्टोन एज. तो उन सबको पेलियोलिथिक क्यों बोला गया? क्योंकि वहां पे सिमिलर काइंड ऑफ स्टोन टूल्स मिले हैं. अब आज तो चलो इंटरनेट है और फेसबुक है और सोशल मीडिया है, कोई भी चीज़ कहीं से भी ट्रांसमिट की जा सकती. तब ऐसा क्या हुआ था कि लोगों ने सिमिलर टाइप ऑफ कल्चर्स डेवलप किए? या फिर हर जगह नियोलिथिक कल्चर रहा ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे एग्रीकल्चर लोगों ने कल्टीवेशन करना शुरू किया और ग्लोबल लेवल पे कल्टीवेशन हुआ है. वी हैव एविडेंसेस ऑफ नियोलिथिक साइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड देन कम्स द एरा ऑफ सिविलाइजेशंस, complex civilizations like Indus Valley, Mesopotamia, Iraq, okay, then Chinese civilization, Egyptian civilization, and they existed almost at same time frame, 200-300 साल के डिफरेंस पे. और आप देखोगे कि उनमें भी काफी सिमिलैरिटीज है, isn't it? और वो ऐसा क्या हो गया कि वो लोग एक दूसरे को कैसे कम्युनिकेट कर रहे थे? कोई फोन तो था नहीं, ना कोई गाड़ियां थी, ना कोई एरोप्लेन चल रहा था, ना कोई सोशल मीडिया था. Then how this happened? So they say that it's because of psychic unity of mankind. आप जिस कंडीशन में हो, means if my condition is similar and I am facing a same problem, means two people are there, उनकी mental अभी physical, economic, socio-economic condition almost similar है, and when they face the same problem, they will come up with the same solution. And this is the reason for independent inventions or similarities between two cultural groups. ठीक है, and this psychic unity of mankind is the reason for all the cultural groups to follow the same trajectory. Is it clear? Clear है? प्लीज अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. Okay, the next one, the most important one, is the concept of survival. ठीक है, this is the most important one. This is the proof of evolution. This is an argument for evolution कि हर culture
सेम ट्रेजेक्टरी क्यों फॉलो करेगा? वो साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की वजह से, क्योंकि हम लोग सोचते सेम, ठीक है। बट द सेकेंड वन, द नेक्स्ट वन इज द प्रूफ ऑफ एवोल्यूशन, सेइंग दैट survival is the proof of evolution. So what is survival? Survivals are those practices which are carried forward due to the force of habit but do not have any kind of relevance in the present time. वो आदतें, ठीक है, वो हरकतें या बिहेवियर जो हम लोग कर तो रहे हैं, बट इट इज मोर और लेस बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ हैबिट, बट दे डू नॉट हैव एनी कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस ऑफ इट, या फिर आपको शायद उसका कोई कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस पता ही ना हो. तो वी यूजुअली वी शेक हैंड्स, राइट? व्हाई डू वी शेक हैंड्स? किसने, ये इसका क्या लॉजिक है कि हम लोग हैंडशेक करते हैं? दोस्ती वोस्ती करने के लिए या फिर ग्रीटिंग्स के लिए? व्हाई डू वी शेक हैंड? एनीबडी? व्हाई इज इट नेसेसरी टू शेक हैंड्स? हाँ, किसी को नहीं पता. एक्चुअली दिस वाज द प्रैक्टिस दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन मिलिट्री जनरल्स यूज्ड टू मीट. वॉरियर्स जब वॉर होते थे तो मिलिट्री जनरल्स जब मिलते थे तो दे यूज्ड टू शेक हैंड. इट वाज ए वे ऑफ शोइंग दैट आई एम नॉट कैरिंग एनी काइंड ऑफ वेपन. ओके, इसलिए हम लोग हाथ मिलाते थे, या उस समय के जनरल्स हाथ मिलाते थे कि कहीं कोई पीछे से बुचर ना कर दे कि अभी ऐसे वो हाथ लेके. तो इट वाज अ वे टू शो दैट यस, आई एम नॉट कैरिंग, आई एम फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ वेपन. दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू शेक हैंड. बट दिस प्रैक्टिस वाज कैरी फॉरवर्ड, एंड अब ये कोर्स ऑफ हैबिट हो गई है, ये आदत हो गई है हमारी, बट इसकी कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस नहीं है. Then this is the proof of, means these kind of survival practices, these are the proof of evolution. That means our culture has evolved. मतलब हम उस कल्चर से बिलोंग करते हैं जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उनमें वॉरियर ग्रुप्स रहते थे. आर यू गेटिंग दिस आइडिया? हमारा कल्चर कभी ऐसा रहा होगा, बाद में इवॉल्व हो गए, लेकिन उस पास्ट वाले कल्चर के कई सारे एलिमेंट्स हमने अभी भी कैरी फॉरवर्ड जस्ट बाय द फोर्स ऑफ हैबिट हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. दीज आर जस्ट लाइक वेस्टिजेस. जैसे कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जब हम लोग पढ़ेंगे, ओके, जो डार्विन का आइडिया था, काफी कुछ इनसे रिलेटेड भी है, मींस दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे दिए गए थे. सो वी हैव heard about, at least heard about Darwin, that we have evolved from apes to human beings. ठीक है, तो कई उसमें एक एविडेंस दिया गया है वेस्टिजियल ऑर्गन्स का. तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स इन अवर बॉडी जिसका कोई यूज नहीं है हमारी बॉडी. They might be relevant at some point of time in past when we were apes or when our diets were very much different, when we were not eating cooked food. But आज उस ऑर्गन का कोई यूज नहीं है क्योंकि हम कुक्ड फूड खाने लग गए हैं, बट वो ऑर्गन अभी भी है. दैट मीन्स इट इज अ प्रूफ ऑफ एवोल्यूशन कि हम पहले कुछ और थे और उस समय वो ऑर्गन हमारे लिए रेलिवेंट था. बाद में हम इवॉल्व हुए और वो ऑर्गन तो इरेलीवेंट रहा, लेकिन वो भी गायब नहीं हुआ, धीरे धीरे चला जाएगा. That vestigial organ is just like appendix, gallbladder. These are two vestigial organs जिसका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है. And that is why we basically we can say that we have evolved. We were not exactly built like this. We have evolved from some other organism. ठीक है, और उस समय उस वेस्टिजियल ऑर्गन की कुछ यूज रही होगी, अब नहीं है. ऐसे ही एक और वेस्टिजियल ऑर्गन है, धीरे धीरे वो गायब हो रहा है, इज द विजडम टीथ. ठीक है, इनिशियली आवर जॉज वेर बिग, वी वेर लाइक एप्स की तरह थे, तो जॉज वगैरह हमारे काफी बड़े थे, उसमें बहुत सारे दांतों की जरूरत पड़ती थी. अभी खाना हमारा कुक्ड होने लग गया है. ठीक है, when the food is cooked it is softer, we don't need to chew it more, right? And that is why the need for all these molars. So you must have heard incisor, canine, premolar, molar, सबसे पीछे वाले जो teeth होते हैं. So third molar is the wisdom teeth, अपर जॉ में. ओके, जो ऑलमोस्ट 20-21 के एज के आसपास आता है, लेकिन आज के टाइम पे बहुत लोगों के वो नहीं आ रहा है या फिर काफी ज्यादा डिलेड आ रहा है. आप में से कितने लोगों का विजडम टीथ आ गया है? सबका तो नहीं आया होगा. व्हाट्स द रीजन फॉर दिस? धीरे धीरे वो विजडम टीथ गायब होता जा रहा है क्योंकि अब उसकी यूज ही नहीं है. ओके, सो दीज आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो बेसिकली
हमारे पास्ट में हमें जरूरत थी, आज हमारे पास उसका कोई रेलिवेंस नहीं है, जस्ट लाइक अपेंडिक्स. इन द सेम वे इन कल्चर ऑल्सो देर आर सर्वाइवल्स, राइट? These are the practices or behaviors which we carry forward due to force of habit, but do not have any kind of contemporary relevance. So one more survival I can tell you, this turban. So the turban which Sikh or say any community that belong from northwest wears, सिंधी कम्युनिटी जो होंगे नॉर्थ वेस्ट के वो भी टर्बन्स पहनते हैं, ऑल दो वहां पे ओकेजनल हो गया है, सिख के लिए ये परमानेंट हो गया है. तो टर्बन का रेलिवेंस क्या था? सिख, यू मस्ट हैव हर्ड, इट्स ए वॉरियर कम्युनिटी, ठीक है? दैट वाज मींस एक रैंडम, एक कोई पर्टिकुलर रिलीजन के भी लोग नहीं थे, एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग भी नहीं थे, रैंडम ग्रुप ऑफ पीपल, दे यूनाइटेड अगेंस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगेंस्ट द मुगल्स, अगेंस्ट फोर्स कन्वर्जन्स, एंड दे क्रिएटेड ए कम्युनिटी दैट इज सिख. सिख का मतलब होता है शिष्य, जो फॉलो कर रहे हैं गुरु को, एंड हु यूनाइटेड अंडर गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है? तो वहां से उनका नाम पड़ गया सिख, और बाद में ये एक फेथ में कन्वर्ट हो गया, बाद में एक रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता. बट दीज काइंड ऑफ टर्बन्स जो काफी और बड़ी थी, वो इट वाज ए हेड गेयर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ स्लॉटर, कोई तलवार मारे कुछ मारे, तो दिस वाज ए काइंड ऑफ कुशन. बट नाउ दिस हैज बीन ए सर्वाइवल वी आर कैरिंग फॉरवर्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ हैबिट, नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ कंटेम्पररी रिलेवेंस. अब ये हमारी आइडेंटिटी का पार्ट हो गया, ओके? बट रेलिवेंस की बात करें तो एनी काइंड ऑफ, दे आर सेइंग एनी काइंड ऑफ कल्चरल बिहेवियर विल हैव एनी काइंड ऑफ रेलिवेंस, तभी तो वो कल्चर का पार्ट बना होगा कभी. बट कई सारे ऐसे कल्चरल बिहेवियर्स होते हैं जो इसका कोई रेलिवेंस नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल तिलक. एनीबडी कैन टेल मी कि तिलक क्यों लगाते हैं? कोई एक रीजन, आइडेंटिफाई व्हाट? रिलीजन, मतलब ऐसा क्या था उसमें कि तिलक लगाना जरूरी है? लाल रंग के तिलक लगा के आप टीका लगा लोगे तो कुछ हो जाएगा? वो तो बकरे को काटने से पहले भी लगाते हैं. नहीं, आई एम, ये तो एक आपने शायद मेरा पहले लेक्चर देखा है शायद, ऐसा, ये तो बहुत रैंडम रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि उस समय जब तिलक लगाया जाता होगा तो वो एक ग्रुप ऑफ पीपल, दे माइट हैव पुट सम काइंड ऑफ सिग्नल साइंस फॉर देम, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि ये मेरे ग्रुप का आदमी है, ये दूसरे ग्रुप का है. मे बी इट्स नॉट वैलिड रीजन फॉर इट, बट कुछ भी ऐसा होगा. बट वी आर यूजिंग इट राइट नाउ दीज डेज, उसका कोई करंट रेलिवेंस पता नहीं है. तो दिस इज एक्चुअली ए प्रूफ ना कि हम लोग 2000 साल पहले वाले कल्चर से ही इवॉल्व होके आए हैं, एंड दैट इज वाई सेवरल. और आप देखोगे कि इंडस वैली, वहां पे कई सारे डेटीज हमें मिले जो अ, और वहां पे बेसिकली शिवा और पशुपति, इसके एविडेंसेस मिले हैं. वी वर्शिप शिवा, so can we say that we are related to Indus Valley people? Because several cultural elements of that Indus Valley culture we are still following. So these are survivals, the practices or habits that are carried forward due to force of habits, but they do not have any kind of contemporary relevance, and these are proof of evolution. इसमें कोई डाउट है? So चार major salient features हैं. First one, that culture evolves in a unilinear fashion, and it's the basic reason is progress. Then from simple to complex, homogeneity to heterogeneity, and indefinite to definite. The third one is similarities or parallels will be due to independent inventions, and this independent invention is due to psychic unity of mankind. And the last one is that the proof of evolution is survivals, those behaviors that are carried forward due to force of habits, but they do not have any kind of contemporary relevance. So this is the basic इन मतलब जिस्ट है ये क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म का. अब इसमें कुछ स्कॉलर्स हैं, आखिर में ये थ्योरी है तो किसी स्कॉलर ने बोली होगी. तो वी आर सपोज टू रीड थ्री मेजर स्कॉलर्स, टाइलर, मॉर्गन एंड फ्रेजर. So we'll be talking about the first scholar, E.B. Tyler, Edward Brunei Tyler.
ओके, यस, हाँ, नहीं, तो वो तो बोले कि ये तो फ़ोर्स ऑफ हैबिट से है, इसका कोई रेलेवेंस अब तो रहा ही नहीं ना। तो वो तो अब जैसे कि हम लोग पूरे-पूरे मॉडर्नाइज़ हो गए, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, ओके, साइंस में बिलीव करते हैं, मेडिसिन में बिलीव करते हैं। लेकिन जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं या हमारा कोई लव्ड वन कोई ऑपरेशन के लिए जा रहा है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को मतलब प्रे करते हैं। तो व्हाई? और या फिर हैलोवीन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है? हैलोवीन आप लोगों ने सुना होगा या अगर आप दिल्ली वगैरह के होंगे, दिल्ली, मुंबई के तो आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा, ठीक है? इट्स लाइक टियर 1 सिटीज़ में ये हैलोवीन वगैरह मनाया जाता है, छोटे शहरों में तो नहीं। तो हैलोवीन या फिर मूवीज़ वगैरह में आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज़ में हैलोवीन देखा होगा। तो हैलोवीन में क्या होता है कि लाइक इट वाज़ अ प्रैक्टिस ऑफ द पास्ट टू प्लेकेट द स्पिरिट्स। वो मानते थे कि जो भूत-प्रेत हैं वो घूम रहे हैं एंड दैट्स व्हाई हैलोवीन वाज़ अ वे टू प्लेकेट द स्पिरिट्स कि उनके लिए कुछ खाना-वाना रख दिया जाता था। अभी क्या है कि वो तो हम मानना बंद कर चुके हैं। ये तो डेफिनिटली हम प्रोग्रेस कर चुके हैं, हम स्पिरिट्स वगैरह में बिलीव नहीं करते। लेकिन अब वो सर्वाइवल के फॉर्म में हम हैलोवीन को सेलिब्रेट करते हैं, वो हो रहा है। तो दैट इज़ नॉट एट ऑल ए साइन कि हम प्रोग्रेस नहीं किए, प्रोग्रेस तो हम किए। हमारी सोच अब स्पिरिट्स में तो नहीं मान रही है, ठीक है? लेकिन बट वो हमारी आइडेंटिटी का पार्ट हो गया या मे बी हमारी हैबिट का पार्ट हो गया। ओके, दैट इज़ इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ईबी टाइलर। सो बिफोर देखो, जब भी कोई स्कॉलर इनिशियली मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा ना उसकी कहानी आपको जरूर बताऊंगा कि वो क्या थे, कहाँ गए, क्या किया एंड ऑल दैट। जिससे ना आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझ में आएगा कि वॉट एवर ही सेड वाई ही सेड इट। ओके, उनके उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या थे। ओके, बट यू डोंट हैव टू राइट इट इन द एग्जाम बिकॉज देखो, आपके एग्जाम में तीन क्वेश्चन आएंगे, तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट वन इज 10 मार्कर, द सेकंड इज 15 मार्कर एंड द थर्ड इज 20 मार्क। अब 10 मार्कर यू आर सपोज टू राइट इन 150 वर्ड्स एंड 20 मार्कर्स करस्पॉन्डिंगली यू आर सपोज टू राइट इन 300 वर्ड्स। तो आपको ये सब कहानी लिखने का टाइम भी नहीं होगा एंड ऑल्सो यू डोंट हैव द स्पेस ऑल्सो फॉर राइटिंग ऑल दीज कहानीज एंड ऑल दैट। आप रेगुलर रेलिवेंट कंटेंट ही लिख पाओ उतना ही काफी हो जाएगा। बट ये कहानियां आपको जानना बहुत जरूरी है दो रीजन के लिए। पहला, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट, इट विल हेल्प यू कनेक्ट द डॉट्स। ओके, एंड आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी चीजें, आपको स्टोरीज याद रहती हैं। ओके, कंटेंट याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो, तो यू विल इजीली बी एबल टू रिप्रोड्यूस ऑल्सो, तो कनेक्ट द डॉट्स। सेकेंड, इंटरव्यू में आपको बहुत हेल्प करेगा बिकॉज वंस यू रेड ए सब्जेक्ट, आप ऑप्शनल में डेफिनेटली दे एज्यूम कि आप आपकी एक्सपर्टीज है ऑप्शनल, तो वहां पे दे कैन गो अप टू एनी डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू योर ऑप्शनल एंड दे एक्सपेक्ट इन डेप्थ आंसर। और खास करके वो सिर्फ ऑप्शनल के बारे में पूछे तभी आपको ऐसा नहीं बताना होता है, वो कई सारे मुद्दों पे भी आपसे जब ओपिनियन लेंगे कई सारे इश्यूज पे, तो दे एक्सपेक्ट कि आपकी कुछ ऑप्शनल की इनसाइट उस आंसर्स में हो। So that can only come when you have a deeper understanding of your option, and that's why these kind of things to understand somewhat in deeper level, that will help you। ठीक है, पर ये कहानियां आपको याद नहीं करनी, तो बी एश्योर्ड कि याद तो अपने को उतना ऊपर ऊपर का मुद्दा ही करना है, बट नोइंग दीज विल हेल्प यू कनेक्ट द डॉट्स। तो एंड इंटरेस्टिंग भी बहुत है, कहानियां काफी सारी, काफी ज्यादा सेंसेशनल कहानियां भी बहुत हैं, मजा बहुत आएगा। तो सुनते हैं कहानी टाइलर की। So Tyler, he was basically born somewhere in 1832, ठीक है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, 1832 में उनका बर्थ हुआ एंड ही वाज born in England in a community that is a Quaker community। So this is a religious minority there, ठीक है, जो प्रोटेस्टेंट्स थे। आप लोगों ने सुना होगा कैथोलिक क्रिश्चियंस एंड द सेकंड वन इज द प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस, okay, who were against Catholicism, and this Protestantism was the reason for rise of capitalism। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट थे, ये एक तरीके से रिलीजियस माइनॉरिटी थे, ये इंग्लैंड की चर्च को या कैथोलिक चर्च को नहीं मानते, बट दे वेर दीज कम्युनिटीज वेर वेरी सिग्निफिकेंट मिडिल क्लास कम्युनिटी ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, हियर व्हाट हैपेंड दैट टाइलर वाज वेरी गुड इन स्टडीज, but just because of his religion he could not get admission into any of the prominent university in England। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में उनको एडमिशन नहीं मिला। तो
The reason was कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में at that point of time only those who believe in the Church of England could get the admission. ठीक है, वो रिलीजियस बेसिस पे एडमिशन था एंड दैट्स व्हाई ही वाज सिंस ही वाज बिलोंगिंग टू क्वेकर कम्युनिटी, तो उसको रिलीजन की वजह से एडमिशन नहीं मिला एंड दैट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ एग्नोस्टिसिज्म अगेंस्ट रिलीजन. मतलब इनका जो एक एग्नोस्टिसिज्म का मतलब होता है दैट a belief that you cannot explain God, and you can say that he can, or you cannot either prove the existence of God nor you can disprove the existence of the God. या आप वो बोल रहे हैं कि आप ये भी नहीं बता सकते कि गॉड होता है और ना आप ये डिस्प्रूव कर सकते हो कि गॉड नहीं हो सकता है. वो ये मानते हैं कि ये इनकेपेबिलिटी है ऑफ मैन्स सेंसेस और लिमिटेशंस ऑफ मैन सेंसेस, दैट कि गॉड के बारे में ना आप कुछ बता सकते हो, आप क्लियर कट प्रूव कर सकते हो, ना आप ये भी बता सकते हो कि गॉड एग्जिस्ट भी नहीं करता. ओके, तो इट्स ए सेंस ऑफ डाउट. वो मतलब बेसिकली एक तरीके से कंफ्यूज थे कि गॉड है भी या नहीं भी. एंड दैट इज व्हाई यू विल सी दैट व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एंथ्रोपोलॉजी, यू विल सी दैट इनका जब आइडिया ऑफ रिलीजन था, आपको यहाँ पे ये एग्नोस्टिसिज्म दिखेगा. Because he is saying that religion is construct of human mind. Religion को human mind ने बनाया है. It's not something divine origin. And this was because of his experience at Oxford University. क्योंकि उसको religion की वजह से admission नहीं मिला. And that's why he developed this kind of feeling towards God. Now, what happened? He later on, since he did not get the admission in the college, so he started working इन द फैमिली बिजनेस ऑफ फाउंड्री. फाउंड्री का मतलब मेटल शेप करते हैं जो लोग, तो उस बिजनेस में काम करने लगे. एंड वाइल वर्किंग इन हिज फैमिली बिजनेस ही स्टार्टेड टू डेवलप सम सिम्टम्स ऑफ टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स आने लगे. एंड दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू रिकवर ही वेंट टू सम वार्मर प्लेसेस. उन्होंने सोचा कि कुछ छुट्टी पे वार्म प्लेस में जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई ही ट्रैवल टू क्यूबा. एंड यहाँ क्यूबा में इनको एक आदमी मिलता है, his friend, that is Henry Christie. He met a friend, Henry Christie, and he was a businessman also. At the same time, he was an archaeologist. तो इन लोग क्यूबा में थोड़ा घूमे उमे, and then Henry Christie was off to an archaeological excavation that he was about to perform in Mexico. तो उन्हें बोला कि मैं एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के लिए मेक्सिको जा रहा हूँ. तो टाइलर ने बोला मैं भी खाली हूँ, मैं भी चलता हूँ. तो दे बोथ वेंट टू मेक्सिको. एंड हियर इन मेक्सिको, मतलब दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ टाइलर्स जर्नी इनटू एंथ्रोपोलॉजी. ही बाय दिस एक्सपीरियंस ही विल स्टेप इनटू एंथ्रोपोलॉजी. क्योंकि आर्कियोलॉजिकल, इफ यू रिमेंबर ओरिएंटेशन सेशन में हमने बताया कि 4 ब्रांचेस हैं. ओके, फर्स्ट वन इज सोशो कल्चरल, द सेकंड इज फिजिकल, द थर्ड वन इज archaeological, and the fourth one is linguistic. So it was entry, this was opening up the way for him to enter into anthropology. ऑफिशियल एंट्री शुरू होती है. ऐसा नहीं था कि वो एंथ्रोपोलॉजी में कोई ग्रेजुएशन करने के बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंथ्रोपोलॉजी एज ए ऑफिशियल डिसिप्लिन कभी था भी नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं करता. So this was ऑफिशियल एंट्री ऑफ टाइलर into anthropology, and he went to Mexico with Henry Christie. एंड हियर हेनरी क्रिस्टी के साथ ये बेसिकली ट्रैवल कर रहे थे, एंड ही वाज लुकिंग एट द कंडीशन. सो ही सॉ ए लॉट ऑफ पॉवर्टी एंड केओस इन मेक्सिको. एंड पॉवर्टी एंड केओस होने की वजह से अगेन हिज फीलिंग ऑफ एग्नोस्टिसिज्म टुवर्ड्स रिलीजन वाज सीन. सो ही ब्लेम्ड द चर्च और द प्रीस्ट फॉर पॉवर्टी, एंड कैथोलिक चर्च को ब्लेम किया कि ये जितनी भी पॉवर्टी है और जो भी है ये आपके इग्नोरेंस की वजह से है और ये आप लोगों के करप्शन की वजह से है. तो ही कंटिन्यूअसली ब्लेम्ड इट. एंड विथ हेनरी क्रिस्टी ही वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर ए लॉट ऑफ आर्टिफैक्ट्स, कई सारे एक्सकेवेशंस वगैरह में पार्टिसिपेट किया, बट मोर और लेस ही वाज मोर फोकस्ड अपॉन द वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ मेक्सिको.
एंड मेक्सिको में जब वो ट्रैवल कर रहे थे, तो वन थिंग दैट ही observed that a lot of things that the people of Mexico were following or practicing was very similar to what he has read or what he has seen in his own native land. मतलब उसके कहीं पढ़ा हुआ है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं जो कि मेक्सिको के नहीं हैं, और कई बार ऐसा भी है कि मैंने वहां पे अपने शहर में या अपने देश में देखा भी है कि काफी लोग सिमिलर प्रैक्टिसेस करते हैं। एंड ही वाज काइंड ऑफ वंडरिंग कि इतने आइसोलेटेड लोग बट ये प्रैक्टिसेस कैसे शेयर कर रहे हैं, कुछ तो रीजन रहा होगा। तो वॉट एवर हिज एक्सपीरियंस वॉज इन मेक्सिको, ही रोट अ बुक। द नेम ऑफ द बुक इज हुआ। तो दिस इज ए काइंड ऑफ ट्रैवलॉग कि जो उसके एक्सपीरियंसेस थे मेक्सिको के, उन्होंने इस ट्रैवलॉग में लिखा और ताकि मैं रिकॉर्ड करता रहूं, ठीक है। बट दिस वॉज एक्चुअली पजलिंग हिम अलॉट कि इतनी सारी प्रैक्टिसेस, इतनी सिमिलैरिटीज कैसे हैं मेक्सिको के लोगों के बीच में और इंग्लैंड के लोगों के बीच में। सो व्हेन ही केम टू हिज ओन प्लेस इन इंग्लैंड, व्हाट ही डिड एक्चुअली, he started looking at the travelogues of several other missionaries और other travelers और other administrators जो दूसरे देश पे दूसरे गांव जाके आके आए हैं, और उन्होंने देखा कि इतनी सारी सिमिलैरिटीज, समथिंग विच आई सॉ इन मैक्सिको वो इंडिया के लोगों में कैसे है, और somebody who has visited अमेरिका उसमें है, एंड somebody who has visited अफ्रीका उसके में भी ऐसी काफी सारी चीजें आपको सिमिलर देखने को मिल रही हैं। तो इस सिमिलैरिटी का ये दो रीजंस हो सकते हैं दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ईदर दे हैव कॉपीड, ओके, और देयर हैज बीन पैरेलल इन्वेंशंस, ठीक है, इंडिपेंडेंट इन्वेंशंस पैरेलली हुआ हो। तो ही सेज कि कॉपी करने का तो कोई स्कोप नहीं क्योंकि उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट तो रहा ही नहीं होगा पास्ट में। तो ही डिसाइडेड कि द रीजन फॉर सिमिलैरिटी इज साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। तो दिस, द मोमेंट वॉट एवर ही रेड, मीन्स जो भी मिशनरीज और ट्रैवलर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स के जो रिटन अकाउंट्स ये स्टडी कर रहे थे, तो ही रोट अ बुक। द नेम ऑफ द बुक इज रिसर्च इनटू अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। दिस इज द सेकेंड बुक। In this book, he says कि जो similarities हैं, they are because of independent invention. It's because of, and this independent invention is because of psychic unity of mankind. That is, human beings across the world think similarly, and since they think similarly, they will come up with the same solution for same problem. क्योंकि similarities दो reasons की वजह से हो सकती हैं, एक या तो कॉपी किया हो, इमिटेट किया हो, और दूसरा या तो इंडिपेंडेंटली इन्वेंट किया हो। पहला वाला उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, सेइंग दैट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर दीज कम्युनिटीज हु हैव बीन आइसोलेटेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू एक्सचेंज एनीथिंग। So the only way they would have basically developed similar practices would have been due to independent invention, and that is because of psychic unity of mankind. And in the same book, he gives the idea of origin of language. Don't write anything, I'll dictate this. So idea of origin of language क्या है? So he says he actually was talking about a lot of communities, yeah, a lot of groups of people whose language, he says, is itni primitive hai that they cannot speak out a lot of words with a lot of things in words. Means they have to use gesture to explain a lot of things. उनके पास बहुत सारी चीजों के लिए वर्ड्स ही नहीं है, वो इतनी प्रिमिटिव लैंग्वेज, ओके। और these are the people who depend more on gestures than words to communicate, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला कि यार ये लैंग्वेज इतनी प्रिमिटिव है, तो शायद
जेस्चर ही लैंग्वेज का प्रिमिटिव फॉर्म रहा. ओके, so language, when it would have originated, it would have been in the form of gestures. People would have tried to communicate in the form of gestures, and then gradually they would have developed some kind of words to communicate. So this is how the language would have evolved. So primitive language, क्योंकि primitive people they were using more gestures. So he says this is how the language would have originated. पहले लोग अपने एक दूसरे से जब भाषा नहीं बनी होगी तो लोग एक दूसरे से जेस्चर्स में कम्युनिकेट करते होंगे. मे बी जेस्चर्स फॉर सम काइंड ऑफ इमोशंस, जैसे अभी हम लोग इमोजीज बनाते हैं वैसे कुछ इमोशंस होंगे, और जिससे पीपल वुड हैव अंडरस्टूड what that person is trying to speak, and gradually these gestures would have first be converted into some kind of words, and later on some other words would have been included, and that is how the language would have developed. So this is, in this book he talks about the evolution of language. Is it clear? Any doubt? So just write. In 1865, in 1865, Tyler published his book, that is Research into Early History of Mankind and Development of Civilization. Research into Early History of Mankind and Development of Civilization. He gathered data. He gathered data from missionaries' accounts. Gathered data from missionaries' account. Explorers' journals or travelogues. Explorer journals or travelogues, and ancient text. And ancient text. He tried to search for similarities. He tried to search for similarities in human cultures. He tried to search for similarities in human culture. When similar arts, customs, when similar arts, customs, beliefs are found in people, are found in people of distant regions, are found in people of distant regions who are not known to each other, known to each other, or who might not have been in contact. Tyler gave two possible explanations. Tyler gave two possible explanations. The first one is parallel invention. Parallel invention. And second, due to contact or evidence of contacts. Okay. तो सेकेंड वाले में आप लिख दो कि रिजेक्टेड, इन ब्रैकेट दिस वाज रिजेक्टेड. एविडेंस ऑफ कॉन्टैक्ट वाज रिजेक्टेड. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ. The book also talks about evolution of language. Evolution of language. He describes certain societies. He describes certain societies with speech
that was so imperfect, that was so imperfect that even to talk about ordinary matters, that even to talk about ordinary matters, they have to take, they have to take help of gestures. They have to take help of gestures. He suggested that, he suggested that gesture language, he suggested that gesture language is part of original utterances. Language is part of original utterances of mankind. मतलब initially how man would have spoken, that is through gestures. ठीक है, ये clear है? Now the third thing is, the third thing is, in 1871 he wrote his magnus opus, that is the best or the one of the most revered book in anthropology. आप कभी भी एंथ्रो में किसी ढंग की यूनिवर्सिटी से मास्टर्स वगैरह करोगे तो या फिर कभी भी एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्स्ट वगैरह आप एंट्री करते हो तो ये बुक आपको कुछ इसके हिस्से हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे. ओके, दिस बुक इज कॉल्ड एज द प्रिमिटिव कल्चर. वेरी प्रिमिटिव कल्चर. तो दिस बुक एक्चुअली इनका काम ये प्रिमिटिव कल्चर में यहाँ पे आई गिव यू द समरी कि प्रिमिटिव कल्चर में इन्होंने तीन चीजें क्या की हैं, बट जस्ट लिसन टू मी व्हाट ही tried to do in this primitive culture. He tried to reconstruct the history of human culture in this book. Tried to reconstruct the past. कैसे वो past में हमारा culture evolve किया होगा. Okay, what was the trajectory? And यहाँ पे he says that there are three major dimensions. So यहाँ पे he actually initially he got influenced by three major scholars before writing this book. एज आई हैव टोल्ड यू कि पीछे इन्होंने जो इस बुक में बताया कि इन्होंने मिशनरीज के अकाउंट, ट्रैवलर्स के अकाउंट और बहुत सारे और स्कॉलर्स अकाउंट को पढ़ा उन्होंने. ठीक है, और वहां पे इनको एक अलग सी इंसाइट्स मिलना शुरू हुई. एंड यहाँ पे ही एक्चुअली रेड सेवरल स्कॉलरली अकाउंट्स. द फर्स्ट वन इज दैट ऑफ एन इटालियन स्कॉलर जियाम बटिस्टा वीको और जी वीको. ठीक है, तो दिस इटालियन स्कॉलर वॉज ए 17th सेंचुरी स्कॉलर. आपको ये इतना डिटेल में याद नहीं रखना है, बस आप सुनो. ठीक है, तो जियाम बटिस्टा वीको ने क्या बोला, ही वॉज द फर्स्ट वन टू एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ सोशल प्रोग्रेस, एंड इन विच ही सेज दैट कि ह्यूमन कल्चर्स definitely would have progress through three stages. The first one is the stage of or age of gods. ठीक है, तो इनिशियली जहां पे हम लोग नेचर वर्शिप, एंशिएंट सॉरी एंसेस्टर वर्शिप और ये सब करते होंगे. ठीक है, दैट इज एज ऑफ गॉड्स. यहाँ पे हमारे पास कोई रैशनैलिटी नहीं थी कि क्यों हो रहा है कुछ भी, तो सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा था. एज ऑफ गॉड्स. Then, due to a lot of instability, the second age that we would have entered is the age of heroes. Okay, and actually ये रेनिसा पीरियड की बात है, तो that's why there were several leaders that were emerging, that were mobilizing the people, and that is the age of heroes. And a futuristic age that we are supposed to enter, we will be entering at in 17th century इसने ऐसा predict किया, that is the age of man. So here rationality will or reasons will take over our thinking pattern या our psychic pattern, and हम सब कुछ उसी हिसाब से करेंगे. So this is Gian Battista Vico talking about three ages that everybody or that every culture will pass. That is age of gods, age of heroes, and then age of
man. Then you must have heard about a scholar. आप लोगों ने पॉलिटी में मॉन्टेस्क्यू का नाम सुना होगा. मॉन्टेस्क्यू हम लोग क्यों पढ़ते हैं? कुछ तो बताया होगा. चेक्स एंड बैलेंसेस, वाटर टाइट सेपरेशन, शायद उनका आइडिया था. हाँ, सेपरेशन ऑफ पावर्स. So Montesquieu was a very famous French political scholar. Okay, and Montesquieu actually did in 17th century comparison of legal system of several societies. तो उन्होंने उसकी बुक भी पढ़ी, Montesquieu. Okay, and what he did, Montesquieu, when he studied the legal system, he compared the legal system across several cultures. So he also gave three stages of development of culture based on study of legal system. पहले तो उन्होंने बोला कि लीगल सिस्टम कभी भी आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू फैमिली, इट्स ऑलवेज कनेक्टेड टू मैरिज, इट्स कनेक्टेड टू इकोनॉमी, इट्स कनेक्टेड. तो इट इज नॉट दैट फंक्शंस इन आइसोलेशन लीगल सिस्टम. ठीक है. तो देन ही सेज कि देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लीगल सिस्टम एंड ही गेव द नेम savagery, barbarism and civilization. He was the one who gave these three names. Okay, savagery is the word that is used, that's a Latin term that means forest dwellers. वो लोग जो जंगल में रहते थे. Okay, that is the word. वहां पे इन्होंने इस कंटेक्स्ट में यूज किया कि हम जंगल में रहते थे और जंगल जैसा कानून होगा. Okay, कोई कानून नहीं होगा, chaos होगा. That is savagery. And then when we entered into herding, means this is related to hunting, this is herding. When we entered into the age of herding, जब हम domesticate करने लगे animals को, okay, at that point of time we had group legal system था, जब लोग एक दूसरे से ग्रुप में बैठ के डिस्कशन करते थे. बट तब भी कोई फॉर्मल लीगल सिस्टम नहीं आया होगा. बट द फॉर्मल लीगल सिस्टम वुड हैव डेवलप्ड इन व्हेन वी हैव एंटर्ड इनटू civilization. Okay, so this is how he actually wanted to explain the progress of legal system through savagery, barbarism and civilization. Then there is another scholar जिसको इन्होंने पढ़ा, that is who is called as the father of sociology, that is Auguste Comte. ठीक है. तो Auguste Comte also wrote about the birth of reason, in which he also says that human reason will progress in three phases और थ्री स्टेज. ह्यूमन जो रीजन्स हैं, जो साइकी है, वो तीन स्टेजेस में प्रोग्रेस करेगी. द फर्स्ट वन इज द थियोलॉजिकल स्टेज. थियो का मतलब होता है रिलीजन. तो थियोलॉजिकल स्टेज दैट इज व्हेन वी बिलीव इन गॉड, हर चीज भगवान है और हर चीज भगवान कर रहा है. सेकेंड इज द मेटाफिजिकल स्टेज, वेर इन, जैसे कि हम अभी मेटाफिजिकल हैं, आपसे कोई पूछे कि आप भगवान में मानते हो, तो सम पीपल इन ऑर्डर टू साउंड समवॉट मॉडर्न, समवॉट ट्रेंडी, so they will say that कि यार भगवान में तो नहीं मानते, but I believe there is some supernatural power जो आपको कंट्रोल कर रहा है. Isn't it? आप लोग कई बार बोलते होगे ऐसा, या किसी को सुना होगा. आप तो क्या बोलोगे, आप तो सुपर मॉडर्न हो. तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव हर्ड पीपल ट्राइंग टू बी ट्रेंडी और इस तरीके से. तो नहीं, भगवान में नहीं मानते, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक कोई सुपरनेचुरल पावर है जो कंट्रोल कर रहा है आपको. तो हियर दैट इज the metaphysical state. Actually what happens ki initially you were believing in God, that God is responsible for all everything that is happening, but there was a very much benevolent image of God. लेकिन आपका एक्सीडेंट हो गया, सपोज गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ हो जाए, आपके साथ कुछ बुरा हुआ, at that point of time you will think that कि यार गॉड को तो मैं बहुत सही मानता था, फिर उसने मेरा एक्सीडेंट क्यों करा दिया यार, मैं तो आईएएस के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, मेरे 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ यार. तो गॉड जैसी कोई चीज नहीं है, कोई एक बेनेवलेंट इमेज, कोई बेनेवलेंट कैरेक्टर नहीं है, एक न्यूट्रल कैरेक्टर है. ओके, देयर इज समबडी हु इज कंट्रोलिंग माय डेस्टिनी, बट दैट इज नॉट बेनेवलेंट, पर है वो. तो दैट इज द मेटाफिजिकल स्टेज. ओके, एंड द लास्ट वन इज द पॉजिटिव स्टेज or the scientific stage. So gradually you will try to find out the reasons for all the phenomena that are happening around you. You can reason it out, and the moment you start getting explanation,
You will incline for more explanation. You will not accept anything on the face of it. You want reasons for it. And that is when we will enter into the scientific stage or the positive stage. Okay. So these are the three stages in which the psyche of mankind or the reasons of mankind will actually progress. Okay. Evolution of reasons will happen. Theological, metaphysical and पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज. तो ऑलमोस्ट तीनों सिमिलर लेवल पे बात कर रहे हैं कि चीजें इवॉल्व होंगी. वन इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ लीगल सिस्टम, द अदर इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रीजंस, द थर्ड वन इज टॉकिंग that we will be the societies will be going through these three stages. Then what happened that there was a German scholar, the name of the scholar is Gustav Klems. एक सेकेंड. Gustav Klems. So he was the one who coined the term that is called as culture, or what was rephrased in English as culture. So he borrowed this term from Clem, used the idea of terminology of Montesquieu and used the idea of Comte. तो कॉम्टे का आइडिया यूज किया, टर्मिनोलॉजी मॉन्टेस्क्यू की यूज की और वर्ड यूज किया किसका? क्लेम का. और इन्होंने अपनी थ्योरी दे दी कि जो कल्चर है ह्यूमन कल्चर दैट विल पास थ्रू दीज थ्री स्टेजेस ऑफ savagery, barbarism and civilization. So the first thing in this primitive culture in this book is this idea, and the first thing that he will एकदम beginning में ही, शुरुआत में ही, he starts this book with the definition of culture, and this is one of his most important contribution towards anthropology. क्योंकि हम जिस चीज को स्टडी कर रहे हैं, जब तक हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसको स्टडी कैसे करें? ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी. So that will come by the idea of definition, that किसकी बात कर रहा है वो. So what actually is culture? So he defines culture. So he says culture or civilization is a complex whole which constitutes knowledge, belief, arts, moral laws and customs, and any other habit which a man acquires being a member of the society. नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल, लॉज एंड कस्टम. इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, एबीसी माल. ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति में? व्हाट यू अर्न इज माल, पैसा. ओके, नॉलेज, बिलीफ, कस्टम्स, मॉरल, आर्ट्स एंड लॉ which a man acquires being a member of society. That means it is not by birth you are having culture. ठीक है, ये आपकी जेनेटिक या बायोलॉजिकल नहीं है. It is something that you will be acquiring from society. अब सोसाइटी के जब मेंबर बनोगे तो आप लर्न करोगे इन सब चीजों. You will be getting some kind of knowledge, you will be given some kind of belief, arts, moral, laws, custom, being a member of society. So this is the idea of culture that he gave in his book Primitive Culture. Complex whole consisting of knowledge, belief, art, moral, law and custom, and any other habits or any other qualities which a man acquires being a member of society. Is it clear? कोई डाउट है? ओके, यस, थोड़ा तेज बोलिएगा. ऑगस्ट कॉम्टे. तो ऑगस्ट कॉम्टे ने क्या बोला कि जो हमारी रीजनिंग की कैपेसिटी है, जो ग्रोथ ऑफ रीजन है, इट विल हैपन इन 3 स्टेजेस. द फर्स्ट इज लाइक जब भी हमारे पास कोई, दैट इज द थियोलॉजिकल स्टेज वेर इन एनीथिंग हैपन्स, we don't have the reason for it. For example, rain is happening, we don't have the reason for it, we'll say God is responsible for rain.
or flood happens, we don't have the reason for it. God is responsible for flood. Somebody died, God is responsible for it. So this is the theological stage. Belief in God. Everything that is happening it's because of divine forces or God. Theological stage. ठीक है. अब यहाँ पे आपने गॉड को फादरली फिगर माना था, ठीक है. बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंस, यू कैन नॉट एक्सप्लेन कि अच्छा बुरा दोनों चीजें हो रही है. अब किसी का सपोज करो गॉड फॉरबिड किसी का रेप हो जाता है, तो आप ये कैसे जस्टिफाई करोगे कि यार गॉड ने किसी के मतलब अगर गॉड इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग ऑन अर्थ, तो हाउ कैन ही मेक समबडी रेप समबडी, और हाउ कैन ही मेक समबडी किल समबडी एल्स. और कई लोगों के साथ इनजस्टिस हुई है, यू कैन सी दैट. हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस? So thereby you move away from the theological stage to metaphysical, because you still don't have the reason कि ऐसा क्यों हुआ. So you will be saying that कि some supernatural power is responsible for it. ठीक है. अभी वो गॉड नहीं है, अभी वो बेनेवलेंट नहीं है, पर कोई सुपरनैचुरल पावर तो है, because you don't have the reason for it. Later on, as the knowledge starts developing, अब साइंस डेवलप होने लग जाती है, तो यू विल हैव रीजंस फॉर ए लॉट ऑफ अदर थिंग्स. ठीक है, कि बारिश क्यों हो रही है, तो यू हैव अंडरस्टूड कि इट्स इवापोरेशन एंड देन कंडेंसेशन एंड देन प्रेसिपिटेशन. दीज आर द थ्री प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन रेन. और फ्लड के लिए भी आपको रीजन पता है, ड्रॉट के लिए भी आपको रीजन पता है. एग्रीकल्चर में ईल्ड कैसे बढ़ानी है, दैट इज नॉट समबडी गॉड. वो आप ईल्ड बढ़ा सकते हो बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ फर्टिलाइजर, सम अदर केमिकल्स और सम अदर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. Anything, most of the things you started to find out the reason, and that is where you will believe that कि ये metaphysical कुछ भी नहीं है, कोई supernatural power नहीं, everything is in the hands of men, and that is scientific stage or the positive stage. So these are the three stages: theological, metaphysical and positive or scientific stage. ठीक है. Yes. हाँ. Age of gods. Second is age of heroes. Heroes का मतलब कि देखो, जब आप लोगों ने देखा होगा कि एंशिएंट इंडिया में जब किंग्स हुए, तो किंग्स किस टाइप के टाइटल्स लेते थे? देवनाम प्रिय. आपने नाम सुना होगा, गुप्ता किंग्स यूज्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ टाइटल्स. अब देवनाम प्रिय का मतलब क्या है? गॉड का सबसे बिलोवेड. ओके. और मींस दे आर, पहले वो टाइटल्स लेने लगे कि हम गॉड के सबसे ज्यादा बिलोवेड है, या गॉड के मैसेंजर्स हैं, या गॉड के भेजे हुए लोग हम यहाँ पे हैं. ओके. तो बेसिकली दीज आर द वन हु वर लीडिंग द पीपल, जिसको बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, जैसे कि आज के टाइम पे सदगुरु. ओके, दैट इज द एज ऑफ हीरोज. कल्ट बनना शुरू हुए जो जो लोगों को मोबिलाइज कर पा रहे थे. एंड द थर्ड वन इज द एज ऑफ मैन. यहाँ पे लोग अपने रीजन के बेसिस पे डिसाइड करेंगे. दिस इज द एरा ऑफ, एंड विच ही सजेस्टेड दैट दिस इज द फ्यूचर. Okay, people will not blindly follow anything, be it God, be it heroes, nothing. They will be rational. They will be reason out things. Okay, अभी भी हम एज ऑफ हीरोज में हैं. लाइक करिज्मेटिक लीडर 2014 में किसी ने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, बट वो आए नहीं अभी तक. ओके. तो आप में से कोई अगर ऐसा कुछ मानता है तो प्लीज क्लास के बाद बात करेंगे, लेकिन आप बुरा मत मानना, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि क्लास में कोई ऑफेंड हो जाता है कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया मोदी जी को. तो हियर दिस इज व्हाट वी आर. हम लोग को ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा लीडर, अभी भी हम ऐसा सोचते हैं कि जब हमारा एक बार कट गया तो हमें लगता है कि कुछ कोई अगली बार शायद ऐसा आ जाए, तो हमको लगता है कि शायद नितिन गडकरी को ले आएंगे तो शायद कुछ वो अच्छा कर देगा, वो अच्छे दिन वही लेके आ जाएगा. फिर बार बार हम बार बार हेल्पलेसली, और फॉर जनरेशन हेल्पलेसली वी आर थिंकिंग कि कोई एक ऐसा लीडर आएगा जो हमें, हमारे देश को अमेरिका जितना रिच बना देगा, और हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरह बिहेव करने लग जाएंगे. और हम अपने बिहेवियर में कोई चेंज नहीं लाते. अभी भी हम टैक्स चुराते हैं, अभी भी हम बिजली का बिल कम देने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सब काम पूरा वही वैसे ही कर रहे हैं, बट वी बिलीव कि कोई ऊपर आके बैठेगा एक दिन, हमारे देश को बढ़िया कर देगा. अभी जैसे दिल्ली वालों को लगता है केजरीवाल बहुत अच्छा कर रहा है, तो ऐसा, तो वी आर लिविंग इन एज ऑफ दिस. बट द फ्यूचर ऑफ अस विल बी ऑल्सो व्हेन वी विल रियलाइज कि यार हर किसी की अपनी इंडिविजुअल एस्पिरेशन होती है. वो भी आया है, किसी कुछ सोच के आया है, वो हमारा कुछ अच्छा नहीं करेगा, उसके अच्छे दिन जरूर आगे. ओके. अब देखो, एक पंजाब में एक सीएम आ गया, तो
एक्चुअली पूरे जिंदगी उसने ओल्ड मॉन्क पी है और उसके बाद वो पंजाब में सीएम बन गया और वो कह रहा है कि मैं पंजाब में नशाखोरी कम कर दूंगा। इससे बड़ा लॉलीपॉप कोई पूरे पंजाब की पॉपुलेशन को कौन दे सकता है? कि वो पूरे स्टेज में पार्लियामेंट में जाके उसके ऊपर केस हो गया कि पार्लियामेंट में दारू पी के बात कर रहा था वो। और बोलता है कि मैं पंजाब में मेरा सबसे पहला एम ये है कि मैं नशा खत्म कर दूंगा। तो एक्चुअली जब पंजाब वालों को लगेगा 5 साल बाद इसने भी काट दिया तो फिर देन दे विल रियलाइज कि हाँ शायद हमको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। एंड दैट इज द एज ऑफ मैन। ओके, तो हीरोज वोंट डू एनीथिंग। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से दैट टाइलर ने इन सबको पढ़ा तो क्या किया दैट ही यूज्ड द आइडिया ऑफ कॉम्टे, टर्मिनोलॉजी ऑफ Montesquieu with to explain the growth or evolution of culture। ठीक है, यहां से खिचड़ी उठा के उन्होंने अपना आइडिया दे दिया। ओके, तो हाँ, तो ही डिफाइंस कल्चर as knowledge, belief, art, moral, law, customs, or any other qualities which a man learns being a member of society. So, as I have told you, that in this book, Primitive Culture, he wanted to reconstruct the history of culture। ठीक है, आप लिखना मत, I'll dictate। ठीक है, तो ये रिकंस्ट्रक्शन कैसे करेगा? तो उन्होंने 3 चीजों को यूज किया इन ऑर्डर टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ कल्चर और द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कल्चर। He used 3 ideas. The first one is a geographical idea, the idea of uniformitarianism। ठीक है, the second is comparative method, and the third one is the idea of survivals। ठीक है, अब ये कैसे इन्होंने यूज किया? So since he wanted to reconstruct the history of human culture, he he thought that कि सिर्फ एक्सकेवेशन से, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से और बोन्स और इन सब से आप पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाओ। तो हाउ टू रिकंस्ट्रक्ट पास्ट देन? So he was at that point of time there was a scholar that was very famous who has given this principle in geology, that is Charles Lyell। Okay, this principle is called as uniformitarianism। So what this uniformitarianism says is that the processes observable, global processes or geological processes observable in the contemporary times, that are happening in the contemporary time, used to happen in the past, and these are the same processes that would have shaped the earth। So these geological processes like sedimentation, erosion, these are happening in the present, observable in the present, used to happen in the past, and these same processes were responsible for shaping the earth, the same geological processes। So earth was not shaped by some कैटास्ट्रॉफीज और एकदम अचानक से कुछ हुआ हो, कि जैसे कि बाइबल में नोआस कैटास्ट्रॉफी थी, कि नोआस कैटास्ट्रॉफी में अचानक से मैन का क्रिएशन हो जाता है, या कोई डूम डे आएगा जिसमें सब खत्म हो जाएंगे, वापस अर्थ क्रिएट होगा एंड ऑल दैट। So it was not something that happened all of a sudden, but rather these geological processes slowly gradually shaped the earth। ठीक है, कहीं पे इरोजन हो रहा था, कहीं पे सेडिमेंटेशन हो रहे थे, कहीं पे डिपॉजिट्स हो रहे थे, तो इस वजह से कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट हुए, कुछ स्ट्रक्चर्स इरोड हुए, एंड दीज आर द प्रोसेसेस दैट वर हैपनिंग ग्रेजुअली थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, एंड दैट लेड टू द दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। ये यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म है। एंड हियर यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म को एंथ्रोपोलॉजी में कैसे लेके आए? तो ही सेज दैट कि कल्चर was also created by similar human processes, human mind और cognitive processes। ठीक है, और ये cognitive processes they have been universal। Human mind has always thought in a similar manner, और ये processes it has been universal, ये हमेशा से ऐसे ही सोचते आए, and that is why जो culture है that is a product of human mind, plus since the cognitive processes are universal and similar,
So every culture will follow the same trajectory of growth and progress. Are you getting this idea? मतलब हम बट शुरुआत से ही सिंस हिस्ट्री मीन्स काफी पहले से ही ह्यूमंस दे थिंक और द कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैव बीन सिमिलर. तो अगर हम हंटर्स रहे होंगे तो जिस तरीके से आज के हंटर सोचते हैं वही वो भी वैसे ही सोचते होंगे. जंगल में जैसे हम लोग को जंगल में डाल दिया जाएगा तो इमीडिएटली वी स्टार्ट थिंकिंग इन ए मैनर हाउ द हंटर्स विल थिंक. तो आज के हंटर्स would be thinking very similarly how the people who were living in jungles 10,000, 12,000, 20,000 years back would have been thinking. ठीक है. तो आज के जो हंटर गैदरर्स हैं, जो आज के ट्राइबल लोग हैं जो हंटिंग करते हैं, ठीक है, जो जंगलों में रहते हैं, उनका बेसिकली जो ट्रेजेक्टरी होगी वो पुराने वाले लोगों की ट्रेजेक्टरी जैसी ही हो जाएगी. मीन्स दे माइट हैव इवॉल्व टू यूरोपियंस व्हाट यूरोपियंस आर, बट जो आज के टाइम पे भी अभी जंगल में रह रहे हैं ना, उनकी भी अल्टीमेट जो ग्रोथ होगी वो वैसी ही हो जाएगी. वो अल्टीमेटली उनका भी पाथ ऑफ एवोल्यूशन भी वैसा ही होगा. व्हाई? बिकॉज वी थिंक इन ए मीन्स द कॉग्निटिव प्रोसेस दे हैव बीन यूनिवर्सल. हमारे सोचने की जो तरीका है, जो ब्रेन जिस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, दिस इज very much same and this is universal. Every human brain thinks in a similar manner, and these cognitive processes have been working since ages, just like the geological processes working since ages throughout the history of earth. Especially throughout the history of human, this cognitive processes, the brain ability to process the information, process the data, to react, to make solutions, everything that has been similar. तो कोई भी हंटर होगा, चाहे वो आज का हंटर हो, चाहे वो 10,000 साल पुराना हंटर हो, चाहे वो 1,00,000 साल पुराना हंटर, वो एक ही जैसा सोचेगा. ठीक है. एंड दैट इज व्हाई दिस uniformitarianism gave the idea of what is called as psychic unity of mankind. Is it clear? That's right. In his book Primitive Culture, in his book Primitive Culture, he sets out to reconstruct the history of human culture. He sets out to reconstruct the history of human culture. Tyler reconstructed the primitive culture using three principles. The first one is uniformitarianism. In bracket you can write, the idea was given by Charles Lyell. The geological processes, just right, the geological processes observable today geological processes observable today are the same processes that shaped the earth in the past. In bracket, like erosion sedimentation. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ इसी में. It was also true of culture. Culture was created
By universally similar human minds, culture was created by universally similar human minds and governed by same basic laws of governed by same basic laws of cognition or thinking. Same basic laws of cognition or thinking. Since human mental processes are universal, since human mental processes are universal, human societies human societies have developed culture along same trajectories have developed culture along same trajectories characterized by progress. Progress. ठीक है, यहां से इन्होंने एक एनालॉजी डेवलप करने की कोशिश की कि सिंस जियोलॉजिकल प्रोसेसेस भी अभी भी जो हो रही हैं वो पास्ट में भी होती थी, इसी तरीके से जो ह्यूमन थिंकिंग प्रोसेस है वो भी जो आज में है वो पास्ट में भी ऐसा ही था. एंड दैट इज व्हाई दिस थिंकिंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कल्चर. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई एवरी कल्चर सिंस ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन थिंकिंग सिमिलर यूनिवर्सली दिस थिंकिंग प्रोसेस इज सेम, so every culture will have same trajectory, same path of evolution. ठीक है, अब यहां से ये लॉजिक लेके आएंगे कि यस अब सिमिलैरिटीज है दो कल्चर में, तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट, देयर हैज बीन इंडिपेंडेंट इन्वेंशन एंड दो कल्चर पूरे के पूरे अगर सेम है दैट मीन्स दे आर एट द सेम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, इफ बोथ द कल्चर्स आर कंप्लीटली सेम, कस्टम सेम है, प्रैक्टिसेस सेम है, बिलीफ सेम है, रिलीजन सेम है, वैल्यूज मॉरल सब कुछ सेम है, दैट मीन्स दे आर एट द सेम stage of development. And development in terms of what? How to understand development? So he started comparing them trait by trait. Religion level pe, so he says monotheism is the most developed form of religion, but major focus of his development was technological development. Major focus was technological development. तो he would say कि आप एकदम क्लियरली बोल सकते हो दैट कि ऑटोमेटिक गन जो है that is the most developed form of guns, लेकिन it would not have been developed in the very first day. ऑटोमेटिक गन से पहले फ्लिंट लॉक, मार्च लॉक ऐसे कर करके बहुत सारी गन्स आती हैं, वो होंगी. तो डेफिनेटली ऑटोमेटिक गन को आप तो टेक्नोलॉजी को आप डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन में लगा सकते हो. एंड एज द कल्चर विल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो इवॉल्व. तो जिसके पास सबसे ज्यादा इवॉल्व टेक्नोलॉजी है वही सबसे इवॉल्व कल्चर होगा. तो दिस इज हाउ ही सेज कि यूनिवर्सली जब जब मूवमेंट आपके पास फ्लिंट लॉक होगा गन का, ये गन का जैसे फ्लिंट लॉक वाली वो होती है जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो डाकू वकू लेके चलते हैं, एक गोली मारने के बाद उसका लॉक कैसे पीछे करके फिर उसको गोली मारनी होती है, आपने देखा होगा वो मूवीज वगैरह में. तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कंट्री ने पहले AK-47 डेवलप की और बाद में फ्लिंट लॉक बना रहे. वोंट हैपन लाइक दिस. तो फर्स्ट सच काइंड ऑफ गन्स वुड हैव कम अप. ठीक है, पहले तो सबसे पहले दुनाली आती थी, फिर उसके बाद लॉक सिस्टम आना शुरू हुआ, मार्च फ्लिंट, फ्लिंट लॉक और मैच लॉक और फ्लिंट लॉक और ऐसे कर करके, एंड देन फाइनली हम लोगों ने ऑटोमेटिक गन्स बनाना शुरू कर दिया, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक. बट इट वोंट हैपन लाइक दिस कि पहले किसी कंट्री ने ऑटोमेटिक बनाया हो. या फिर फॉर ऑटोमोबाइल लाइक कोई कार को बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है? किसी कंट्री ने या किसी कल्चर ने व्हील को डिस्कवर किया होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि कार पहले बन गई, इंजन पहले बन गया और व्हील बाद में बनेगा. Definitely the technology would have evolved in such a manner. And this is how human brain thinks. So it will always think from zero. सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को इन्वेंट करेगा and once this foundation has been laid, it will think beyond it. ठीक है, और फिर उससे ऊपर तो सब जब मोबाइल फोन्स आए तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमने शुरुआत में ही स्मार्टफोन बनाना शुरू कर दिए, टच स्क्रीन क्यों नहीं बनाए?
हमने शुरुआत में कीपैड ही क्यों बनाए? इट बिकॉज इट्स एन इवॉल्व टेक्नोलॉजी एंड डेफिनेटली पहले आप बेसिक बनाओगे, उसके बाद ही इवॉल्व टेक्नोलॉजी आएगी. Since human mind thinks universally in the same pattern, and that's why this will happen. So technological processes will can be used to understand the direction of progress. Okay, yeah, technological progress is the parameter for progress, जो technological achievements. So that will how we will be ranking the cultures. The most technologically evolved culture is the most developed form of culture will be labeled as, और उसको सबसे ऊपर rank किया जाए. This is the idea, because if as I have told you in the last class कि the idea was of that of progress, evolution का idea was marked with the idea of progress. तो इसीलिए हमने बोला कि यूनिलीनियर फैशन और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होगी. एंड डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करना है, प्रोग्रेस को अंडरस्टैंड करने का क्राइटेरिया क्या इन्होंने बोला? टेक्नोलॉजी. कि आप टेक्नोलॉजी को देखो, आपको प्रोग्रेस का आइडिया मिल जाएगा. एंड एज द कल्चर इवॉल्व, टेक्नोलॉजी विल एक्चुअली चेंज और टेक्नोलॉजी विल बिकम बेटर, मोर कंफर्ट लेके आएगी. मैन हैप्पीनेस, मैन स्ट्रेंथ, मैन सबसिस्टेंस सब कुछ बढ़ाएगा ये. ओके, सो दिस वाज हिज क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस ऑफ कल्चर. सो दिस आइडिया केम फ्रॉम दिस बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म. यहां से इन्होंने एक एनालॉजी लगाई कि जैसे जियोलॉजिकल प्रोसेसेस सेम है, वैसे मेंटल प्रोसेसेस भी सेम है, एंड इट इज यूनिवर्सल इन नेचर. Okay, and since these mental processes are same and universal, that is why trajectory of every culture will be same, and that trajectory will be savagery, barbarism to civilization. And as the trajectory is same, तो culture progress कैसे करेगा? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जाएगी, टेक्नोलॉजी बेहतर होती चली. Is it clear? So just write this. Societies with same culture, societies with same culture can be said to be in the same stage in development of culture, can be said to be in the same stage in development of culture. Tyler explains that similarities are pronounced in the realm of technology. Similarities are pronounced in the realm of technology. ओके, अब कोई ये गेस कर पा रहा है कि यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म से पास्ट को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे? एनी गेस? यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म से पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? वन हु गिव्स मी द आंसर, आई विल गिव यू 500 रुपीज अमेजॉन कूपन. राइट? गलत होगा तो क्या होगा? ले नहीं लूंगा. हाँ, एग्जैक्टली, यू गेट द कूपन. प्रिमिटिव सोसाइटीज जो है, अगर आप प्रिमिटिव सोसाइटीज को अभी स्टडी, सिंस द कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर यूनिवर्सल, तो जो आज प्रिमिटिव सोसाइटी है वो एग्जैक्टली पास्ट की सोसाइटी के जैसा सोच रही हो. तो अगर आपको अपना पास्ट समझना है तो आज की प्रिमिटिव सोसाइटीज को स्टडी करो एंड यू विल बी एबल टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट सिंस द कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर सेम. इज इट क्लियर? ओके, so this is how this uniformitarianism helped develop the idea of psychic unity of mankind. and इससे इन्होंने ये बताया कि अगर आपको पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो आज की प्रिमिटिव सोसाइटीज को स्टडी करो. ओके, he says that कि the current primitive societies, जो primeval extant primitive societies, that means currently contemporary living primitive societies, they are the monuments of barbarism. monuments of barbarism का मतलब
दे आर लिविंग मॉन्यूमेंट्स, दे आर द लिविंग रेप्लिकाज ऑफ द स्टेज ऑफ बार्बरिज्म और सैवेजरी। और आप उनको सीखो, उनको देखो, और एग्जैक्टली आप पुराने कल्चर को सीख पाओगे, देख पाओगे एग्जैक्टली जो आप पहले थे। एंड वो क्यों? क्योंकि कॉग्निटिव प्रोसेसेस, इट इज यूनिवर्सल, थिंकिंग पैटर्न इज यूनिवर्सल। तो आज की प्रिमिटिव सोसाइटी जो 20,000 साल पहले की प्रिमिटिव सोसाइटीज रहे होंगे, हंटर्स रहे होंगे, उनकी तरह ही सोचती होगी। तो आपको वो उनको देखना है, तो आज की प्रिमिटिव सोसाइटीज को देख लो और आपको उनके बारे में पता चल जाएगा। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? So this is how he tried to reconstruct by the past through this. So just write, since laws of mind, since laws of mind are uniform, since laws of mind are uniform, patterns of contemporary primitive societies in single quote, patterns of contemporary primitive societies must be similar, must be similar must be similar to those of extinct, those of extinct prehistoric peoples, to those of extinct prehistoric people. तो मतलब आप कॉग्निटिव प्रोसेसेस को उनको देखोगे तो यू विल इजीली बी एबल टू रीट्रेस योर पाथ, कि आपके जो करंट कल्चर है उसके पास्ट को इस तरीके से आप रिकंस्ट्रक्ट कर पाओगे। तो दिस इज द फर्स्ट आइडिया। यहाँ तक कोई डाउट है? आई एम गोइंग वेरी स्लोली, प्लीज कोई डाउट है? ऐसा ना हो कि क्लास के बाद आके मुझे गाली दे रहे हो कि क्या बता रहे थे वो। यस, पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना मतलब देखो, अगर आपको अपने पास्ट के बारे में पता करना है कि आप कैसे थे, ठीक है, हमारा मीन्स पास्ट, हमारा मीन्स हमारा पूरी सोसाइटी, हमारी कल्चर कैसे, ह्यूमंस का कल्चर कैसा था, या हमारे इंडिया में कल्चर कैसा था। तो यू कैन नॉट, मतलब पास्ट में तो कोई सीसीटीवी था नहीं, या फिर कोई रिटन रिकॉर्ड तो है नहीं। व्हाट वी कैन डू इज ईदर देयर शुड बी सम आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस करेंगे, लेकिन उसको इंटरप्रेट कैसे करें? तो इंटरप्रेट करने के लिए व्हाट ही सेज कि आप आज की प्रिमिटिव सोसाइटीज को स्टडी करो, जो वो सेम मीन्स पे जी रहे हैं, उनके पास सिमिलर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है। जैसे पास्ट में हम लोग पत्थर यूज करते थे एज ए टूल, तो आज की प्रिमिटिव सोसाइटी जो अभी उसी सेम टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, उसको स्टडी कर लो, आपको पता चल जाएगा कि पास्ट में हम कैसे रहते होंगे। ओके, एंड दिस इज हाउ वी विल बी एटलीस्ट मेकिंग ए गुड गेस अबाउट अवर पास्ट। ठीक है, एंड इसका बेसिक एजम्पशन यही है कि सिंस वी हैव सेम टेक्नोलॉजिकल लेवल, तो वी थिंक इन द सिमिलर लेवल, सिमिलर पैटर्न। तो जब हमारे पास ऐसे टूल्स रहे होंगे तो हम भी इनकी तरह ही जी रहे होंगे, हम भी इन्हीं की तरह रह रहे होंगे, हमारी बिलीफ सिस्टम भी वैसी होगी, हमारी थिंकिंग पैटर्न भी वैसी। तो ये लोग हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो यही होगा रिकंस्ट्रक्ट, अपने पास्ट को एक्सप्लेन करना या समझना, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज कंपेरेटिव मेथड। सो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? कंपैरेटिव मेथड। इट्स वेरी सिंपल, एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, कि आप ट्रेट बाय ट्रेट कंपेयर करो, एंड कंपैरेटिव मेथड इज बेस्ड ऑन ए बेसिक आइडिया दैट ट्रेट्स विच आर सिमिलर आर रिलेटेड इन ओरिजिन। ठीक है, मतलब ये इनके हिस्ट्री रिलेटेड है, ये ओरिजिन इनके रिलेटेड है। अगर आई एम हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर विथ यू, और तो बेसिकली इट्स, इसका ओरिजिन सिमिलर रहा होगा, और ये बिहेवियर का ओरिजिन क्या है? हमारी कॉग्निशन, हमारा माइंड। एंड सिंस वी आर बिहेविंग इन ए सिमिलर मैनर विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, so this behavior, it's because of a common origin, because of our mind thinking in a similar manner. तो बेसिकली तभी हम लोग एक जैसा ही बिहेवियर बना पाए। ओके, तो दिस इज व्हाट कंपैरेटिव मेथड विल डू इन ऑर्डर टू रैंक द कल्चर, कि आप कौन से कल्चर के रैंक में हो, आप सैवेजरी वाले में हो, या बार्बरिज्म में हो, या सिविलाइजेशन वाले में हो।
So basically we have to go for comparisons in which that particular culture or that particular civilization will be broken down into discrete elements, एंड फिर उन डिस्क्रीट एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाएगा कि रिलीजन में देखें कि ये कैसा है, और रिलीजन में से हम अपने यूरोप को अपने रिलीजन से कंपेयर करना चाहते हैं, तो रिलीजन देखेंगे कि यहाँ पे पॉलीथिज्म है, हिंदुइज्म में जैसे पॉलीथिज्म है, वहाँ पे मोनोथिज्म है, दे वुड से कि मोनोथिज्म इज द मोस्ट इवॉल्व फॉर्म ऑफ रिलीजन, ये पॉलीथिस्टिक है तो दैट मीन्स दे आर बैकवर्ड. ओके, so in the same way, this in this way comparative method में you will be able to rank or label the culture in a particular order कि ये कल्चर तो जितना ज्यादा यूरोप के ज्यादा सिमिलर था उसको आप उतना सिविलाइजेशन के क्लोज मानोगे, और जितना ज्यादा डिफरेंट होगा उतना ज्यादा आप बैकवर्ड मानोगे. दिस इज व्हाट टाइलर वुड हैव सेड कि कंपैरेटिव मेथड यूज करना हर कल्चर, मतलब बहुत सारे अकाउंट्स इन्होंने स्टडी किए किसी ट्रैवलर का किसी और ट्रैवलर का, एंड ही कंपेयर्ड देम with the culture of Europe, and with this comparison he kind of established them in a particular kind of ranks कि वो savage state में है, वो barbaric stage में है, या फिर वो civilization के stage में है. And the similarities, the more is it is similar with the European culture, more it will be closer to civilization, and the more difference with the European culture, the more closer it will be towards savagery. And इसके basis पे ये comparison हो रहा था. Are you getting this idea? So just write comparative method. Comparative method is based on an assumption that similar objects are historically related. Similar objects are historically related. The first step is to dissect. Dissection जो होता है, dissect civilization into smaller details, and then they are supposed to be compared, with other cultures. ठीक है, then they are supposed to be compared with other cultures. तो इन दोनों से बेसिकली कैसे पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे ये समझ में आ गया होगा आई गेस. थोड़ा हाँ ना बोल दो, नहीं समझ में आ रहा. ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवल्स, द थर्ड वन इज डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवल्स. तो हियर एज आई हैव टोल्ड यू, सर्वाइवल क्या है? इट इज प्रैक्टिस दैट इज कैरिड ऑन ड्यू टू फोर्स ऑफ हैबिट बट हैविंग नो कंटेम्पररी रेलेवेंस. तो डोंट राइट, आई विल डिक्टेट दिस, जस्ट लिसन. तो टाइलर ही विजिटेड अमेरिका, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि अमेरिका में कुछ फेमस कॉफ़ी शॉप है, तो उसका नाम ऐसा था. एंड सम पिज़्ज़ा पार्लर, द नेम वाज यी कॉफ़ी पार्लर, यी ओल्ड पिज़्ज़ा पार्लर. अब उनको समझ में नहीं आया, अमेरिकन्स वेर आल्सो कॉलिंग दिस एज यी ओल्ड पिज़्ज़ा पार्लर, एंड यी का कोई मतलब नहीं था उनकी लैंग्वेज में. बट व्हेन ही स्टार्टेड स्टडीइंग आर्केइक इंग्लिश, तो वहां पे दिस वाई और दिस इज रेड एज
दिस, ठीक है। तो इफेक्टिवली आर्केइक इंग्लिश में भी इसको प्रोनाउंस किया जाता, इट वुड हैव बीन द कॉफी पार्लर और द ओल्ड पिज्जा पार्लर। बट what happened, we have evolved from archaic to modern English आ गए, but this is the survival, the practice due to the force of habit. People used to write it, उस समय की दुकान थी पुरानी, since 1600 or since 1700, so that shop was being run and the name was just like this. So although people have moved to other form of English, but this was the survival. Okay, so it should have been read like this, the old means अगर archaic English में देखते हैं, बट अभी तो archaic English में y को रिप्लेस कर दिया गया th से और इसको दा बोला जाता है। प्रोनाउंसिएशन सेम था, बट ये जो राइटिंग है वो एज इट इज रह गई, एंड दैट इज हाउ दिस प्रैक्टिस वाज बीइंग कंटिन्यूड टू ड्यू टू द फोर्स ऑफ हैबिट, जिसका कोई कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस नहीं था। शॉप का नाम ऐसा ही रखा गया एंड पीपल स्टार्टेड टू प्रोनाउंस इट लाइक ई, जिसका कोई सेंस नहीं, because they were not aware ki why this name is there. So it is a carry forward of the archaic English, which is irrelevant right now, but it is being carried forward due to the force of habit. And this is how he says कि उनकी बत्ती जली कि हाँ ये तो कल्चर में भी होता है। And this is the evidence that जो modern English है that has evolved from the archaic English. And in the same way, when cultures में ऐसे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज द प्रूफ दैट द मॉडर्न कल्चर इट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द पास्ट कल्चर्स और सिंपल कल्चर्स। So this survival will also help to reconstruct the past, because that will tell us a lot of elements which do not have current relevance or contemporary relevance, but they were relevant at that point of time. So Halloween was relevant when we used to believe in spirits, कि spirits रहती होंगी, उनको प्लेकेट करना है, तो हेलोवीन उस समय रिलेवेंट थी। बट आज के टाइम पे हेलोवीन इट्स जस्ट अ सर्वाइवल। बट ये जरूर इससे पता चल गया क्या, कि हम कभी ना कभी ऐसे कल्चर को जरूर बिलोंग करते थे जो स्पिरिट्स के एग्जिस्टेंस को बिलीव करता था, एंड दैट इज वाई इट यूज टू प्लेकेट, इट यूज टू ऑर्गेनाइज अ फीस्ट फॉर द स्पिरिट्स, ठीक है। तो दीज आर द सर्वाइवल्स विच आर proof of evolution, that our culture, current culture, has evolved from some primitive cultures, and that is why certain elements of primitive cultures are still followed due to the force of habit, ठीक है। Is it clear? So just write survivals are those process, customs and opinions carried by the force of habit carried by the force of habit into a new state of society, into a new state of society without any contemporary relevance, without any contemporary relevance, it is a proof, it is a proof of an older condition of culture, if it is a proof of an older condition of culture from which the newer one has evolved, from which the newer one has evolved. So just write this. For example, write these two statements. Okay, have you written this? लिख लो आप एक बार, फिर I'll dictate.
Just write Y in archaic English was read as Y in archaic English was read as TH. Y in archaic English was read as TH or pronounced as TH. ठीक है. The symbol, it shows the symbol has survived. It shows the symbol has survived, although its meaning is not really understood. It shows the symbol has survived, although its meaning is not really understood. ठीक है. एंड यहाँ से इन्होंने एक चीज और वापस रीफॉर्म करने की कोशिश की. ही इज सेइंग दैट कि जैसे कुछ प्रैक्टिसेस इन द मॉडर्न सोसाइटी कैन बी द एविडेंस ऑफ प्रिमिटिव, ऐसे पूरी की पूरी सोसाइटी कैन बी द एविडेंस ऑफ द प्रिमिटिव सोसाइटी. हो सकता है कि कोई एक ऐसी सोसाइटी हो जो पूरा का पूरा बिहेवियर प्रिमिटिव सोसाइटी जैसा कर रही हो. यू गेटिंग दिस आइडिया? कोई एक आज के टाइम पे जो हंटर गैदरर्स हो वो पूरा का पूरा सर्वाइवल हो ऑफ दैट प्रिमिटिव सोसाइटी दैट वुड हैव, मतलब वो चेंज ही ना हुए हो, उनका एवोल्यूशन ही ना हुआ हो, तो उनकी डेवलपमेंट ही ना हुई हो. एंड दैट इज वाई जैसे कुछ प्रैक्टिसेस इन अस कैन बी द सिंबल्स ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटीज, दैट ऐसे पूरी की पूरी सोसाइटीज कैन ऑल्सो बी सीन एज द प्रिजर्वेशन ऑफ द पास्ट. तो आपको वो सर्वाइवल्स लोकेट करने हैं इन ऑर्डर टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट. यू विल गेट दिस सर्वाइवल्स एंड दिस विल टेल यू what in past our society was. ओके, तो ऐसे कई सारे प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी में देर इज लाइक कजिन मैरिजेस वगैरह अलाउड नहीं है, हिंदू सोसाइटी में नहीं है, साउथ में अलाउड है. ठीक है. या फिर चलो एक जो लड़की की जब शादी हो जाती है तो जो उसके हस्बैंड का छोटा भाई होता है उसको क्या कहते हैं? देवर. सो दिस देवर, इसका संस्कृत जब आप इस संधि विच्छेद करोगे, व्हेन यू ब्रेक दिस वर्ड इट मींस द्विवर. द्वि मींस सेकंड एंड वर का मतलब होता है हस्बैंड. ओके. एंड देवर, अब देवर का मतलब है कि ये सेकंड हस्बैंड है. एंड यू मस्ट हैव सीन कि कई सारे फोक सॉन्ग्स में भाभी और देवर के बीच में कुछ रोमांटिक या काइंड ऑफ फ्लर्ट रिलेशनशिप दिखाए जाते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस. ओके. तो व्हाई दिस, लेकिन आज के टाइम पे तो रेलिवेंट नहीं है. व्हाई दिस? सो दिस इज ए सर्वाइवल ऑफ द पास्ट. व्हाई? बिकॉज व्हेन द हस्बैंड वुड हैव डाइड, in that case the next male member of the family will marry the widow of the dead brother. This used to happen. And उस समय पॉलीगाइनी भी होती थी कि man can have multiple wives, and that was good or relevant in that kind of society जहां पे warfare बहुत ज्यादा होते थे. So in order to protect the dignity and honor of the women so that they are not captured as prisoners of war or subjugated to humiliating condition, these kind of relationship were permitted, wherein a man can have multiple wives and on the death of the brother he will marry the widow of his brother. This will happen. And also to retain the property in the family. कि अगर डेथ हो गई हस्बैंड की, सपोज करो ब्रदर की, तो उस समय जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसके बच्चे और उसके वाइफ में चले जाएंगे. ऐसे क्या होगा कि द फैमिली विल गेट डिवाइडेड एंड द प्रॉपर्टी विल ऑल्सो गेट डिवाइडेड. एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस वॉज ए वेरी valid way of life, but it is not relevant right now, isn't it? But the terminology has still continued. This is a very good example of survival. Okay, although the practice is not there, but the terminology जिसके बेसिस पे ये टर्म मीन्स द प्रैक्टिस जिसके बेसिस पे टर्मिनोलॉजी रखी गई थी वो अभी खत्म हो चुकी है, लेकिन टर्मिनोलॉजी अभी भी यूज करते हैं, हम देवर ही बोलते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रेलिवेंस ऑफ दिस वर्ड. तो nobody actually thinks कि देवर का मतलब क्या है. तो देवर का मतलब it's like the second husband, and that is why you will find in several folk songs and even Bollywood जो 80s 90s की जो मूवीज हैं वहां पे भी आप भाभी देवर का एक काइंड ऑफ फ्लर्ट रिलेशनशिप आप देखोगे. ओके, एंड दैट वाज वेरी कॉमन, isn't it?
तो एंड इन द सेम वे दिस यूज टू हैपन आज के टाइम पे भी जीजा और साली के बीच में, सिस्टर इन लॉ। इट्स द रीजन इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कभी पास में अगर ऐसा कुछ हो जाए कि इफ द वुमन डाइज इन दैट केस, or if the woman is infertile in that case. So since the man is has the right to basically child from his wife, in that case आपको that right, in order to oblige towards that right, तो क्या होगा कि वो family basically will give man the access to the second daughter. Else what will happen since if the woman is infertile or if the woman died basically, so in that case the family relation might get severed, family relation might get broken down. So in order to maintain that relationship, अभी आपने वो मूवी देखी होगी हम आपके हैं कौन, बहुत पुरानी मूवी है। नहीं, हम आपके हैं कौन, उसी में तो शायद उसकी डेथ हो जाती है एंड दैट माधुरी दीक्षित इज सपोज टू मैरी हिज हर जीजा, एंड ऐसे कई सारी और मूवीज हैं जिसमें आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। So this thing do not exist right now since the life expectancy is great and we have a lot of other medical solutions. अभी जैसे सरोगेसी आ गई है या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आ गया है, तो इनफर्टिलिटी इज नो मोर अ बिग प्रॉब्लम राइट नाउ। बट in the present time also you will find that flirtatious relationship between Jija and Sali. So this is a kind of survival. Okay, although this is a practice due to the force of habit, not having any contemporary relevance. It was relevant in the past. जब हमारी सोसाइटी वॉरफेयर मोड में थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो थी, इनफर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा हाई थे एंड ऑल दैट स्टफ। बट राइट नाउ ये सब प्रॉब्लम्स तो खत्म हो गई हैं, बट द प्रैक्टिस इज स्टिल बीइंग कंटिन्यू। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? एंड ऐसे जैसे हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में कुछ प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, वैसे कोई सोसाइटी पूरी की पूरी पास्ट को रिप्रेजेंट कर सकती है। ओके जैसे कि आज की जो हंटर गैदर सोसाइटीज हैं, जो ट्राइबल्स हैं, हो सकता है वो पूरे के पूरे पास्ट को रिप्रेजेंट करें, ऐसा टाइलर कहते हैं। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? जस्ट राइट दिस। as in the contemporary society as in the contemporary society, there can be some practices which can be labeled as survival. There can be some practices which can be labeled as survival. In the same way, in the same way, an entire society, in the same way, an entire society may reflect, an entire society may reflect entire, sorry, earlier stage of human evolution. Entire society may reflect earlier stage of human evolution. Okay. So here he just gave this idea that the history of mankind hai, it has been labeled with the idea of progress, and civilization can be looked as improvement, means throughout civilization, throughout our history, when we will be reconstructing it, we'll see improvement, and this improvement is for what? Man's happiness, man's wisdom, man's safety, man's goodness and man's power. ये सब चीजें हम इम्प्रूवमेंट से अचीव करना चाहते थे, गुडनेस, पावर एंड हैप्पीनेस। ओके, एंड दैट विल बी बाय मेकिंग श्योर दैट वी हैव मोर फूड, वी हैव लेस थ्रेट्स, वी आर सेफ, वी आर एबल टू रिप्रोड्यूस। ओके, एंड दैट इज, ही सेज दैट कि ये इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, प्रोग्रेस कैसे होगी? इट्स बाय एक्वेंटेंसेस विथ द नेचुरल लॉज ऑफ द वर्ल्ड, और व्हाट वी से एज साइंस। ठीक है, जैसे जैसे हमारी साइंटिफिक नॉलेज ग्रो करती जाएगी, we will become more happy, more powerful,
मोर गुड, गुड इन द सेंस कि एफ्लुएंट होते चले जाएंगे. तो ही सेज कि रैंक कैसे करेंगे. Acquaintances with the natural laws of the world was least in the stage of savagery, medium or mean in the stage of barbarism, and most in the stage of civilization. जैसे जैसे हमारी नेचुरल लॉज ऑफ द वर्ल्ड, जैसे जैसे हम फिजिक्स को जानने लगे, केमिस्ट्री जानने लगे, बायो को जानने लगे, वी वर एबल टू decode the nature's phenomena as we ever to do it. The moment हम इम्प्रूव करते गए, और उससे क्या हुआ कि फूड वॉज नो मोर ए प्रॉब्लम. लाइक देखो अभी इंडिया ने क्या बोला है वर्ल्ड में, कि दैट इंडिया हैज इनफ व्हीट दैट इट कैन फीड द एंटायर वर्ल्ड. ठीक है. और एक टाइम आज से 40-50 साल पहले इंडिया क्या था, कि इंडिया को यूएस से व्हीट इंपोर्ट करना पड़ा था. ओके. बट उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज हम लोगों ने इम्प्रोवाइज की, हमने जीएम क्रॉप्स यूज किए और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज को यूज किया. एंड नाउ वी आर इन ट्रू सेंस trying to project ourselves as the granary of the world. See, the knowledge has increased, and hence this knowledge has improved what? Man's goodness, power, and happiness. So this is what he is saying, that acquaintance with the natural laws of the world was least in the case of savagery, mean in the case or medium in the case of barbarism, and max in the case of civilization. Just write this last line and then we'll wrap it up. Familiarity with the physical laws of world, familiarity with the physical laws of the world and accompanying power, that means जब नॉलेज आएगी तो उसके साथ साथ जो पावर आएगा, and accompanying power of adapting nature, accompanying power of adapting nature to man's ends. To man's ends are lowest among savages, mean among barbarians, and highest among modern educated nations. Based upon society's mastery over material culture, one can assign a relative rank to the culture. ठीक है. कि उनकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितनी है उसके बेसिस पे आप उनको रैंक असाइन कर सकते हो, कि वेदर दे आर सैवेज, वेदर दे आर बारबेरियंस, वेदर दे आर civilization. So this is the entire ranking will be on the basis of this technological या material culture के progress क्या है उनका. ठीक है. तो आप में से किसी ने पूछा था कि savagery, barbarism, civilization में क्या डिफरेंस है, तो उन्होंने यही बताया कि आप मटेरियल कल्चर्स को देखो, उसके बेसिस पे आप उनको रैंक कर सकते हो कि वेदर दे आर सैवेज, वेदर दे आर बारबेरिक, वेदर दे आर सिविलाइज्ड. हाँ, टेक्नोलॉजी टूल से. एनीथिंग एल्स? कोई डाउट है आप लोगों को? तो अब एक क्वेश्चन आता है जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कि क्वेश्चन ये आता है कि वेदर द प्रोग्रेस एंडेड व्हेन आफ्टर टाइलर, या टाइलर जिस टाइम पे रह रहे थे, या क्या प्रोग्रेस खत्म हो गई है? तो फिर सिविलाइजेशन के बाद का क्या स्टेज होगा?
So he says it doesn't mean कि progress has actually ended, but civilization के बाद क्या होता है कि that we are actually moving from an unconscious way of development towards a conscious way of development. कि अभी तक क्या था कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, दिस विल एक्चुअली हैपन लाइक दिस, इट्स द स्टेजेस आर ऑलरेडी सेट, बट टुडे वी आर सो पावरफुल that we can decide our trajectories. Initially the trajectories were already decided, pre-decided कि savage से आप barbarism की तरफ जाओगे, barbarism से civilization की तरफ जाओगे, but now we basically are so powerful that we can decide our trajectories. And यहाँ पे human consciousness, human rationality has developed so much that we can actually are moving towards a path of progress that is a conscious one. तो हमने computers develop कर लिया, अब हम AI बना रहे हैं. ओके, कॉन्शियस, हम अपनी मशीन्स को भी इंटेलिजेंस दे रहे हैं. ओके, अर्लियर वी वर डेवलपिंग टूल्स, नाउ आवर टूल्स आर सो इंटेलिजेंट दैट दे कैन देमसेल्फ रिप्रोड्यूस, दे कैन देमसेल्फ रेप्लिकेट. आप मशीन से मशीन क्रिएट कर रहे हो, ओके, ऑटोमेट कर रहे हो. तो बेसिकली दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि पहले इट वाज वेरी मच अनकॉन्शियस, द पाथ वाज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड दैट सैवेज से बार्बरिज्म, बार्बरिज्म से सिविलाइजेशन, इस तरीके से ही जाओगे. बट लेटर ऑन इट विल बिकम अ कॉन्शियस वन. दिस इज नॉट मतलब ये बहुत नेक्स्ट लेवल की बात है, समझ में आए तो इट्स ओके, एल्स जस्ट लीव इट. यहाँ तक हमारे सिलेबस में है. इज इट क्लियर? विल रीड सम मोर कंट्रीब्यूशन बाय टाइलर in the next class. That's it from my side today. Thank you.